Good evening, friends. I welcome C. Lokesh Gupta ji and CS Deepak Sharma ji in his absentia, the guest speakers of today's seminar, and our senior CA Gopal ji Agarwal ji and CA JP Agarwal ji, convener of Vikas CA State in this seminar. Friends, this is our 10th webinar in this calendar year 2022 with a total of 30 CP hours. Friends, first technical session will be deliberated on discussion on challenges in concurrent bank audit, and this session will be deliberated by CA Lokesh Gupta ji. Second technical session will be deliberated on discussion on latest changes in company law and procedure, and this session will be deliberated by CS Deepak Sharma ji. Now I will request convener CA JP Agarwal ji to please deliver the welcome address. Thank you, Jansab. Thank you very much. Good evening, friends. I would like to welcome all of you on this 10th virtual CP meeting of this calendar year 2022 with total 30 CP hours. I welcome CA Lokesh Gupta ji and CS Company Secretary Deepak Sharma ji in absentia, well-known and dynamic expert on the subject. Guest speakers of today's virtual CP meeting. As Jansab said, the schedule of today's technical sessions. The technical sessions will be run accordingly. Now, before handing over the desk to Lokesh Gupta ji for first technical session, I take privilege to introduce him. Although there is no need of introducing him, but as a courtesy, I want to introduce him. So I introduce him. Lokesh Gupta ji is a LLB from Delhi University in 2001 and qualified DSA with first rank in India. FAFD ICI in 2018, Forensic Audit and Fraud. Partner of Messrs. Shyam S. Gupta and Company. He is expert in bank audit, conducting bank branch statutory audit of bank for the last more than 20 years, concurrent audit, stock audit, and internal audit of banks, both in public and private space, conducted audit of specialized units in banks such as currency chest, conducted audit of outsourced area in banks such as agencies involved in refilling ATMs, including audit of ATM itself, speaker on statutory audit and concurrent audit of bank branches at a large number of seminars. He is speaker on FEMA, FCRA, and international taxation also. Provided training to bank staff. Contributed as member of group on certification course on concurrent audit of bank. Contributed as member of group for revision of manual statutory audit of banks for the year 2021. Presently faculty for certification course on concurrent audit. So he is very much expert on concurrent audit, which is the subject today's. Contributed as a member of group formed to prepare a minimum audit checks for concurrent audit, conducting a statutory internal audit of large number of units in both public and private space, providing consultancy especially for FEMA and international taxation to large number of clients, including listed companies and foreign companies. Now, without taking much time, I hand over the desk to today's speaker, Sri Lokesh Gupta ji, for share of his view. Thank you. Lokesh Gupta ji, please. Thank you, Agarwal ji. First of all, my thanks to Jaiprakash Agarwal ji, Pradeep ji, और मेरे बड़े भाई गोपाल जी for inviting me here to speak about this topic of concurrent bank audit. Now, this topic per se is such a wide topic. I am fortunate to be part of the faculty group in the concurrent audit course of the institute. And we practically do it over a period of 7 days, actually 6 to 7 days, actually. And still, sometimes we feel that we have not been able to give all the material to the members. So what I'll try and do is, I've got nearly 1.5 hours to share my views here. So what I'll try from my side is to cover some important points and to try and cover some important issues which are there in concurrent audit. Now, I will start with basically talking about the elephant in the room when it comes to concurrent audit, which is basically the fees for concurrent audit. So I know this is something which everybody feels that sometimes we feel it is inadequate to the kind of working which the bank expects us to do. And especially when it comes to the risk we are taking as far as concurrent audit is concerned, it is really sometimes I frankly start to wonder
that whether we should be actually taking concurrent audit where especially the management is asking us to certify. Like I remember in case of one of the public sector banks, they are asking the auditors to certify that they have done 100% verification of all the transactions done in the branch during the month. So this is something where I think as an CA myself who does concurrent audit, and as a professional, I start to think whether we should even accept such kind of assignments where this kind of a lopsided liability is cast upon the auditor, which everybody knows, even the bank management knows is practically not possible for the auditors to actually complete. And especially where the fees expectation is so low and the expectation of the staff or the facilities which is provided to the audit team is such a in a bad position. But of course, we as an auditor need to understand the law, and then of course we should take decisions as to whether we should accept such kind of assignments or whether we should protest in such kind of a scenario where a lopsided liability is being cast upon us. Let me also warn you when we start off with this audit discussion, and though this is a very good tool in the hands of the banks to actually get a check on their asset quality, their workings at the branches, and maybe sometimes to even pinpoint frauds before they actually happen in the branches. On the other hand, when it comes to the auditors, the you should also see that a lot of cases or disciplinary issues are actually coming to the institute in relation to concurrent audit of the banks, and this is where I actually again want to basically give a kind of maybe a message to my professional brothers that whenever we are taking a responsibility, whether it is concurrent audit or any certification work as of now, we should be equally understand. First, we should understand what is the responsibility we are taking and whether we should accept that kind of a responsibility, which is especially, as I told you, in cases where lopsided responsibilities are being cast upon the auditors, we should be very careful. Now, with these words, I'll start off with my presentation. Now, of course, the presentation is quite long, and I don't know whether we'll be able to completely do justice today or not. So my request would be that make it as interactive as possible. The ultimate purpose of any such deliberation is to actually make it as interactive as possible so that maximum members feel benefited out of it, right? So I would have no issues in answering all the queries which you have. Of course, to the extent I am aware of the banking laws and banking regulations. And uh, I'll try that whatever queries you have in between, anybody can ask me a question in between also. And at the last, I'll try and keep at least 10 minutes of our time so that any questions you might have, we are able to answer the complete questions today itself. Okay. Now to start off with my concurrent audit, this is the area which I want to cover basically. One is what is the expectation of the bank management? Then what is the scope of concurrent audit? This is a very important area. Then how to plan the audit, specific areas to be covered under audit, what are the working papers to be maintained under audit, and what is the effective reporting. I think in any audit, and Gopalji here is here, so I've listened to him talking about reporting actually a lot of times. And I think in any audit, the most effective tool in the hand of the auditor is report, and the only tool, frankly, if you ask me. And your reporting would determine what kind of work you have done actually. So nobody see in case of a concurrent audit, the report is going to a senior management, right? So basically, they are consuming your report. They are not sitting at the branches, not sitting what kind of working staff you have employed, how many hours you have spent. So through that reporting, actually, they will be able to see the kind of quality which you have delivered while doing audit in a bank. So that reporting part becomes very important. So we'll definitely spend at least 5-10 minutes of our time in understanding what can be the contents of a good reporting, especially in case of a concurrent audit. Okay. Now, in case of bank, of course, nothing to say. They expect you to do everything. They expect you to even find frauds. They expect you to basically be kind of a god there, able to detect frauds, able to detect all kind of irregularities which are there. So their expectation is something which sometimes it starts to feel that they are expecting more than we can actually deliver, right?
Now, what is then the scope of concurrent audit? That becomes important. So one, it would be defined in your appointment letter. So your appointment letter would be very important, right? Then there would be various RBI pronouncement which would be there, which would actually tell that what kind of work needs to be covered by the concurrent audit, what kind of issues needs to be covered in the audit. Then our ICI regulations would be there. One, very recently they have come out. So it came out earlier, but now nuclear is something which has been now introduced. So I think now what is happening is that any controversial issue you first introduce, then you defer, and then when you reintroduce, people really don't care actually. So nuclear is something which again is something which would impact every kind of audit which as an professional we are going to do, even in bank concurrent audit. So we need to be equally aware of it. Then scope is not only limited to above. So generally in the concurrent audit report, you will find areas like any other issues. So you may actually report on issues which are not specifically mentioned in the report, not specifically mentioned in the appointment letter, if you feel it is impacting the bank in any ways, right? So this is the kind of scope you are looking at. Now, there is a RBI circular specifying on the concurrent audit system in banks. Now, this circular, before that circular, the guidelines were rather very helpful to the CAs, that they were asking for a specific coverage in terms of percentage of the bank risk was to be covered under concurrent audit. This they have done away in 2019. Now the scope, coverage of business, etc. under concurrent audit, they have left to the discretion of the banks. So bank can decide what they want to cover, how much they want to cover under concurrent audit. Of course, they are saying that the risk sensitive areas should be covered under concurrent audit. All centralized processing centers should be covered under audit. So this is, I think, a very good thing which they have pointed out, that centralized processing centers are actually creating a lot of risk for the banks. So also needs to be under some kind of an audit mechanism, continuous audit mechanism. Then they are saying that areas to be covered under concurrent audit must include random testing of sufficiently large samples of transactions. Now, this is very important. And this is where my concern is that, like, for example, I told you there is a public sector bank. We were doing their concurrent audit. We have refused to take any further concurrent audit assignments from them because they are asking for a certification that you are doing 100% verification of all the transactions which the bank staff has done, your branch staff has done in the audit month, which we all know that it is practically impossible. And even the RBI is not asking you to do it. They are only asking for a random testing of a sufficiently large sample of transactions. So they're not expecting you to do 100% transaction checking, which is practically not possible. So your branch may have 20 people. They are doing transaction throughout the day. You cannot cover that transaction by putting one staff, even for the whole day. So this is not the expectation of neither the RBI and should not be the expectation of the management boards. So that we need to keep in mind. Then they have said the option to consider whether concurrent audit should be done by the bank own staff or external auditors, including retired bank staff, is left to the discretion of the individual banks. So you have seen a lot of banks, PNB is one I am aware, which is using some retired bank employees along with chartered accountants for the purpose of concurrent. How effective they are, I am not sure, but of course, this is the discretion of the bank management. Then partner of CA firm, if director on the board of the bank, no partner of same firm can be the concurrent auditor. Such. So they have placed this restriction. Then they have said if external firms are appointed, any serious acts of commission or omission are noticed in their working, their appointment may be cancelled and the fact may be reported to RBI and ICI. So, of course, the disciplinary mechanism they are talking about. Then ACB of the bank to decide maximum tenure of external concurrent audit firm, which generally should not exceed 5 years on continuous basis. So earlier, certain banks would have some kind of a cooling off mechanism. So after 3 years or 4 years or 5 years, they used to ask for a cooling off period. Certain banks, what they were doing was they were changing the branches, but they were not asking for a cooling off. Now they have mandatorily placed a cooling off period of 5 years. After every 5 years, you have to have a kind of a cooling off period. Okay. Then no concurrent auditor to continue with the branch business for a period more than 3 years. So once you have audited a unit or a branch for 3 years, it needs to be rotated. He cannot continue for more than 3 years. Then age limit of retired staff engaged as auditor capped at 70 years.
So any retired bank employee, whether being used by an external firm or used directly by the bank for the concurrent audit, his age cannot exceed 70 years. He cannot be employed as a concurrent audit. And then remuneration to be paid to external firms to be decided by, of course, the bank itself. So, which is definitely a concern, but I'm sure with the auditors actually pushing for it, the fees would definitely go up, and it should go up considering the kind of expectations the banks have with us. Then structured reporting format to be provided to auditors, which is generally there in every case. Minor irregularities to be rectified on spot. Major deficiencies to be brought to the notice of HO. Then quarterly review of important features to be placed before ACB. Fraudulent transaction to be reported to IED as also to chief vigilance officers. Follow-up action and rectification of deficiencies to be given top priority. So of course, you point out a mistake. If it is not rectified, nobody is looking whether they are getting rectified, whether they are being taken care of. The pointing out itself does not serve any purpose. Ultimately, the purpose is to rectify. Okay. So that they have pointed. Then this is something which is controversial. Our institute might have a different view on this. It says that LFAR for the branches which are not subject to statutory audit shall be submitted by the concurrent auditors as reproduced below. So it says in respect of branches below the cutoff point, which are subject to concurrent audit by chartered accountants, henceforth LFAR and other certification done earlier by statutory branch auditors will now be submitted by the concurrent auditor, and such branches may not generally be subject to statutory. So this is where we feel that the LFAR part is the statutory branch audit, but somehow they have pointed out that in case where branches are below the cutoff point and where the statutory audit will not happen, the branch, if it is covered by us accountant auditor, he is responsible for issuing the LFAR. गुप्ता जी, इसमें जो LFR इशू करता है जो इंटरनल ऑडिटर है, उसके वो कॉन्करेंट ऑडिटर इसके चार्जेस अलग रहते हैं इसके, या इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ तो सर ये अगेन चार्जेस अलग देने हैं या नहीं देने, इसके लिए आरबीआई साइलेंट है. So it is now again the discretion of the bank as to whether they are willing to give you a separate charge or not. So it is left to the discretion of the bank. तो सर जब हमारा अपॉइंटमेंट होता है, ये उस टाइम में डिसाइड हो जाता है कि हमें देने हैं या नहीं देने, क्या जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर एक्टिविटीज के लिए जो कॉन्करेंट की जनरली जो आपने अभी बताई है, ये पार्ट टू पार्सल बाद में बन सकता है और हमारी फीस को कहीं किसी का पार्ट है वो. तो सर इसके लिए ना मैं प्रदीप जी ये बात कहूंगा कि एक्चुअली कॉन्करेंट ऑडिट और जो मैनेजमेंट के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट मॉडिफाई हो सकता है. इट इज ओनली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन बी मॉडिफाइड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. नाउ व्हाट इज दिस इज द लॉ. नाउ प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो आपको एक ईमेल शूट कर देते हैं. आज की डेट में तो ईमेल है, ईमेल आ जाता है आपके पास कि आपको ये भी करना है, which may not be part of the original agreement, but because the management wants you to do it, you are expected to follow, and you have no right to protest. And anybody who protests would be told कि सर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप छोड़ दो. So this is practically what is happening. Of course, I think ये एक इशू है जो हम बार-बार रेज कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट आल्सो. स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी क्या हो रहा है, अगर आप सर्टिफिकेशन देखेंगे तो एक तो सर्टिफिकेशन है जो आरबीआई आपसे मैंडेट कर रहा है कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर से आपको ये सर्टिफिकेट लेना है. इट मे बी रिलेटिंग टू इंटरेस्ट सबवेंशन, इट मे बी फ्यू अदर सर्टिफिकेट, एंड देयर आर मेनी अदर सर्टिफिकेट व्हिच बैंक इटसेल्फ हैज इंक्रीज्ड बाय देमसेल्फ कि भाई ये भी आपको देने हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, which are not as per the mandate of any rules or regulation. It is the decision which the bank management might have taken. Now, this is actually creating a problem actually, because this is not expected. Either the bank management should pay a separate fee for it, and it should be the choice of the statutory auditor whether they should accept it. But when we talk about concurrent audit also, of course, they can expect you to do some additional certification work because you are part of the internal audit mechanism of the bank. But I definitely feel if it is not part of the original agreement and the fees which was offered therein, then there should be an additional fees which should be offered to the auditors based upon the quantum of the work. And then, of course, you can expect them to maybe help you with that additional work also. And nobody would mind actually if he's getting paid
then he would be ready to work and provide that additional certification also, right? It is only when you expect to do X number of work and you are going to be paid Y for it. Now the work is getting increased every day by X plus 1 and X plus 2 and X plus 3, but the fees is only standing at Y plus 0 only. So that is actually a concern actually. I Yes, think that so is basically, so there have been cases, a few years back, I remember in one of the cases, one of the bank told us, we were doing the concurrent audit, that you are responsible for doing the KYC of all the accounts, live accounts at the bank, irrespective of whether those accounts were open in your tenure or they were open before your tenure. So we refused. We said that this is not possible. This is a huge work for which a separate staff would be required, and of course the cooperation of the bank would also be required, and we are unable to do so within the time and the fees which you are giving to us. So either you pay us additional fees and then we would give you an acceptance for doing that additional work. So basically the purpose being that the additional work should give you additional fees if it was not part of the original act. certainly, sir. Yeah. So Right. now, audit planning, if we talk about, is smart. So check the amount and the nature of work involved, very important, because your fees is dependent upon the kind of work which you are going to do. Draw an audit program to cover all the necessary aspects. Audit report can be the starting point. So you can maybe pick up the audit report itself. It would be a detailed report. You can mark what is the requirements in detail there, what is the expectation. So what we do practically, I can share with you, sir. So any area which has more than few checkpoints, we make a separate Excel sheet. We provide it to our audit team, that, and we put a reference number. So again, this you have to fill up this Excel, and then when I do a review, of course, as an audit, as a partner who is going to do that work, I have to do a review also. So we actually review through that Excel sheet whether they have completed the work or not. So this actually helps them. One, they do not miss out on any point. And then secondly, it gives us a point of checking also that they have covered all these points or not. So this is what we do. Then use appropriate staff trained for the specific job. So because in concurrent audit, the team is expected to be there on a daily basis. You will not be able to train them on a daily basis. They would be there alone maybe. So in that case, it is very important that you train them before they go, and that training should continue on a regular basis. So what we do in our case of our bank staff, which goes on concurrent audit, that every second and fourth Saturday is a holiday for the bank. We put it as a training days. So when they are expected to report to the office, we try and give them some kind of a training on that day. Either one of them can prepare some RBI circular or bank internal circular, pick it and try to train the other team members. So he also gets trained when he is preparing that, and he can then train other members. So this is what we try and do. Then they review the work on regular basis, very important, sir, because they might do a mistake, but the liability would cast upon us. So we have to do a review. Then the audit documentation is very, very important, sir. So this is a very important aspect. Why? Because a lot of times I have seen what is happening is our professional brothers are doing a lot of good work. But when it comes to showing that good work, so in case they are called to show what they have done, they are unable to produce any documentation for it. And in case of a concrete audit, it becomes very, very critical because the question might be asked by the bank itself, it might be asked by the regulator, it might be asked by the institute. So there are many multiple forums where the questions might be asked. And it is very important that the documentation should be ready with you, should be already with you. So that a lot of times what would happen, when the question would be asked, you would have no access to retrieve any information from their system itself. So that system would, you will not have that access. So that information should be in any case readily available with you so that you are able to answer any queries which they might ask. Then ensure necessary updation of knowledge of the concepts. Okay. Now, what can be the generally the areas where you can train your audit staff into? So audit, concurrent audit needs to update them with the existing practice and guidelines of the bank and new circulars in banking industry. RBI circulars, master circulars, FAQs placed on the RBI website would be important. Then we have manual on concurrent audit issued by our institute, which can be a guiding tool. Then guidance note on audit of banks
it gets revised every year. This year also the process already started. So I am fortunate enough to be part of that process this year again. So they have already started the process of revision of the guidance note on audit of banks. Then concrete audit manual provided by banks. So generally banks provide some kind of a training manual or some kind of a written material. Then reading of bank manuals and circulars on bank intranet site. So most of the circulars now are available on the intranet, some site of the bank. So you should refer to those circulars for the purpose of updation of your knowledge. Then keep handy policy documents which are used on a very daily basis, like bank financial powers in relation to loans, expenses, etc. So there would be generally a question key whether they have worked according to the delegation of financial power to the bank manager. So unless until you have that policy circular guidelines with you itself, you will not be able to answer it correctly. So some important circulars, maybe you can download and save it on the computer which has been allocated to you, or maybe get a printout from the bank if it is possible. So this is important. Then I think very important in case of this era of audit where everything is centralized, everything is on computer, there are less and less records manually which are maintained by the bank. It's very important that we should have some kind of audit trails, some kind of system generated reports should be made available to us. I remember we were part of exercise in the institute wherein we were trying to advise RBI as to what we expect from a concurrent auditors mechanism. So we devise a list of audit trails or kind of exception reports which should be made readily available to a branch auditor. So in a lot of cases, we have seen that banks now have a system wherein these kind of reports they generate. There is some kind of an intranet site of which address you can see, and you can visit that intranet site and use that site for the purpose of downloading these ready-made reports which the bank may have provided to you. Some of the very important reports can be like all expenses incurred by the bank exceeding a threshold limit, then debit transaction passing CBS without using checks. That would be important. Then account pending for scanning, signature scanning, and entries passed in those accounts. So if there is no signature scanned into the system, now there is no signature cards with the bank. So how they have actually checked that the signatures are correct. Then manual debits to income accounts. So generally now, because everything is system driven, we do not expect that the income accounts would be manually debited, or there is a manual debit to an interest paid account. So if there are any such manual debits, we should be able to get it through a CBS system report itself, rather than trying, because otherwise there would be thousands of entries in a branch in an interest paid account. So expecting the auditor to find a manual entry would be practically impossible unless until this ready-made report is made available to the auditor, through which he can verify the reason, the necessity of doing a manual debit, and whether the correct amount has been debited or not. Then RTGS, NEFT transactions, value dating transaction. What is value dating? Anybody who can tell me maybe what is a value dating transaction? So value dating is basically, I generally tell again and again, basically this is a concept which is very unique to the CBS system. Now, let's take an example, like in case of the accounting softwares, which we generally use like Tally, NBC, etc. In case we want to make an entry, we forget to make an entry, we can go in a backdate, change the transaction date and make the entry itself in a backdate itself. But the CBS systems do not allow a backdated entry because of obvious reasons. Because if they allow a backdated entry, a lot of frauds can be done. So they do not allow a backdated entry. But suppose for some genuine reason, the bank needs to make a backdated entry. Suppose, let's take an example. Suppose a customer visits a bank. He wants to get a FD made. He wants his current account to be debited and FD made. He gives a transaction for that on 1st November. Now the branch manager takes the request, but he forgets to put that into the CBS system. After 15 days, the customer comes back, tell them, sir, I have given a request, but it seems that you have not made my FD. So the branch manager realizes that he has forgot to put that entry. Now the system would not allow him to make an entry
today, say on 16th November, he will not be able to make an entry, the transaction date of which would be 1st November. So the system gives him an option that the transaction date would automatically be 16th November only, but he can do a value dating. So the system would allow him to do a value date of 1st November. So for all calculation purpose, system would accept that the FD has been made on 1st November, though the transaction has been put on 16th November. So this is a genuine need also, but it can be misused also, right? So it is very important that all cases where value dating has been done, all those transactions should be provided to the auditors in a report so that they are able to verify the need and the reason for doing such a value dating transaction, right? इसमें जैसे आपने कहा कि वो 1 नवंबर से एफडी बन जाएगी उसकी ट्रांजैक्शन 16 नवंबर को, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 नवंबर से मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। लेकिन पैसा उन्होंने डिडक्ट नहीं किया करंट अकाउंट से। हाँ, तो सर क्या होगा कि इसके अंदर ना आप इसकी जैसे अगर एक एंट्री देखें तो उसमें होगा कि करंट अकाउंट डेबिट से 10 लाख की एफडी थी, करंट अकाउंट डेबिट 10 लाख एंड एफडी अकाउंट क्रेडिट 10 लाख रुपीस। यस। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन वैल्यू डेट होनी चाहिए से 1 नवंबर से। तो करंट अकाउंट में भी 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक वो बैलेंस होना चाहिए था कंटिन्यूअसली 10 लाख का। ये सब अवेलेबल है। हाँ, अगर अवेलेबल है तो वो 10 लाख का बैलेंस निकल जाएगा 1 तारीख से करंट अकाउंट से भी फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। और एफडी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 तारीख से ही 10 लाख से। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि उन्होंने क्रेडिट तो कर दिया एफडी को, अब ये अगर करंट अकाउंट की जगह सेविंग्स अकाउंट होता, अगर मैंने सेविंग्स अकाउंट की वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शन नहीं करी होती तो क्या होता, मुझे 10 तारीख तक सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट भी मिलता और एफडी का भी इंटरेस्ट मिल जाता। तो इसलिए वैल्यू डेटिंग ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस वी हैव फाइंड आउट प्रॉब्लम्स। लेकिन सर जो करंट अकाउंट से जो एंट्री निकलेगी 10 लाख रुपए, तो 16 नवंबर को निकलेगी ना वो तो। हाँ, ट्रांजैक्शन डेट वुड बी 16th ओनली। सो व्हेन यू ओपन दिस ट्रांजैक्शन the date of transaction would be shown as 16th November only, but for the calculation purpose, because the value date has been put as 1st November, for calculation purpose it would be considered as 1st November. Okay, so this is there. तो ये काफी यूज होता है सर, और सिर्फ इंडियन बैंक स्टेटमेंट में भी लिखा आता है, स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट में भी ये लिखा आता है वैल्यू डेट और ट्रांजैक्शन डेट। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। So generally that both these dates would be same. Say 98-99% of the transaction that would be the same date, पर जो 1% का ट्रांजेक्शन है या मैं कहता हूँ आधे % का ट्रांजेक्शन जिसमें वो चेंज हो रही है डेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट वेरिफिकेशन। तो अनलेस until that list itself is provided to the auditors, the auditors will not be able to check कि अगर एक ब्रांच ने सपोज करो 10,000 एंट्री की है एक मंथ के अंदर, तो क्या वो 10,000 एंट्री खोल के देखे कि भैया किसमें तूने वैल्यू डेट डाल दी, वो नहीं हो सकता। तो अगर ये रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी ऑडिटर को रेडीमेड, तो उस रिपोर्ट में से 25 ट्रांजैक्शन है, 50 ट्रांजैक्शन है, उसको तो वो वेरीफाई कर पाएगा, पर 10,000 ट्रांजैक्शन को कोई ऑडिटर वेरीफाई नहीं कर सकता। और इसमें से कोई ऐसे भी डेटा इतने दिन का गैप हो, जैसे आपने 15 दिन का एग्जांपल लिया है? नहीं सर, कई बार मैंने 2-2, 3-3 साल की पुरानी एंट्रीज भी देखी है वैल्यू डेटिंग में। तो इसका कोई नियम है सर, अपने कोई रेगुलेशन बना हुआ बैंक में कोई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैक डेटेड एंट्री अलाउ ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि बैक डेटेड एंट्रीज अगर वो अलाउ करेंगे तो इट विल अमाउंट टू अ फ्रॉड एक्चुअली, क्योंकि फिर तो कुछ भी एंट्री हो सकती है ना बैक डेट में। नहीं, वैल्यू डेटेड करके जो आपने बताया, इसके लिए भी तो कोई रूल्स रेगुलेशन होगा ना सर, तभी तो कर पा रहे हैं वो। हाँ सर, उसके अंदर ऑप्शन होती है जहां पे वो वैल्यू डेट चेंज कर सकते हैं, और वो ऑप्शन इसलिए की जाती है कि जहां पे उनको जरूरत हो जेन्युइन रीजन के अंदर, वहां पे वो चेंज कर पाए। ठीक है। ओके, इसी तरीके से और सारी चीजें हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग ऑफ एंट्रीज इन ऑफिस अकाउंट्स, पेमेंट ऑफ एफडी इन कैश। तो हमें पता है कि एफडी इन कैश की पेमेंट 20,000 से ऊपर के केसेस में नहीं हो सकती। कैश डिपॉजिट 50,000 से ऊपर कितने करे हैं, उसके अंदर हम आपको पैन वगैरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है चेकिंग की। फिर उसके बाद अगर कोई डीडी पे ऑर्डर्स की पेमेंट कैश में की गई है, कोई मॉडिफिकेशन अपडेशन इन कस्टमर अकाउंट किए गए हैं, कोई इसके सिग्नेचर अपडेट किए, एड्रेस अपडेट किया, फोन नंबर अपडेट किया, ईमेल अपडेट किया, उसका रीजन क्या है सर कि बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स व्हिच वी आर सीइंग नाउडेज,
happen because first they change the non financial parameters like उन्होंने एड्रेस और ईमेल चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, और उसके बाद दे क्रिएटेड अ रिक्वेस्ट, क्योंकि लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस की आपके पास मैसेज आता है ऑन ईमेल, ऑन मोबाइल नंबर, सो दे फर्स्ट चेंज द ईमेल एंड मोबाइल नंबर बिफोर दे डू अ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। तो इस तरह की चीजें हैं। देन अकाउंट मॉडिफाइड फ्रॉम ऑपरेटिव, ऑपरेटिव बनाया फ्रॉम इनऑपरेटिव स्टेटस, तो वो कितने केसेस हैं, उसके अंदर रिक्वेस्ट लेटर यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक फॉर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इन दोस केसेस, तो वो आपको देखना है। लिस्ट ऑफ अकाउंट वेयर टीडीएस इज मार्क्ड एज नो और रेट इज निल, तो यू हैव टू चेक कि भाई ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट नहीं होने वाला उन केसेस में। देन लिस्ट ऑफ केसेस वेयर लोन अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द मंथ, कितने केसेस हैं लोन के, आप लोन्स की जब बात करते हैं एडवांसेस की, so it is very important that you should know how many cases of accounts which are open, new fresh accounts in loan accounts which are open। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा मुझे कितने डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत है। अगर उन्होंने आपको 10 डॉक्यूमेंट दिए, आपने चेक कर लिए, अकाउंट 12 खुले थे, 2 के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो मेरी पॉपुलेशन क्या है। देन लिस्ट ऑफ अकाउंट वेयर इंटरेस्ट नॉट चार्ज बाय सिस्टम, लिस्ट ऑफ अकाउंट वेयर इंटरेस्ट रेट इज एब्सोल्यूट फिगर्स इन न्यूमरल्स। जनरली क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है तो जनरली हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं आज की डेट में, फिक्स रेट नहीं होता। तो फ्लोटिंग रेट के अंदर मतलब वो किसी रेफरेंस रेट के रेफर में होगा, तो वो आपको देखने की जरूरत हो सकती है। फिर जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने चेंज किया, कोई एलसी खोली सिस्टम में, बैंक गारंटी खोली, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स खोली, टीओडीज जितनी भी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट अनक्लियर डिफेक्ट्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं सर, जो मुझे लगता है कि हमारे को कोशिश करनी चाहिए जितनी ज्यादा हम रिपोर्ट्स को ऑब्टेन कर पाए, जिससे हमारे को हेल्प मिलेगा इन ड्राइंग कि हमें क्या क्या एरिया को कवर करना है, क्या क्या चीजों को चेक करने की जरूरत है। ठीक, देन हमें सैंपल्स लेना है। सैंपल्स वुड बी बेसिकली डिटरमाइंड बाय द ऑफ कोर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स द गाइडेंस गिवन बाय आवर इंस्टीट्यूट एंड द आरबीआई गाइडलाइंस कि हमें कितना सैंपल लेना है किस एरिया में, और फिर स्पेसिफिक क्वेरीज हमें बनानी है और प्रिसाइज अप टू पॉइंट हमारे को क्वेरी को रेस करना है। और जब हम क्वेरी रेस करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्या है, दैट द क्वेरी शुड बी सेल्फ कंटेन्ड, that the query should be, anybody who reads that query should be able to understand that what is the concern of the auditor here. He should not be required to call the auditor or call the branch and understand कि सर ये क्या issue है। The query should be complete in itself, right? Because जो read करने वाला है इस query को basically, that person may not be sitting at the branch. So by reading the query itself, he should be able to understand what is wrong, what is the concern of the auditor there. Then working paper should be prepared and maintained for future reference, which is the, I think, a very, very critical activity, which we sometimes ignore. Okay. Now, कुछ specific areas की हम बात कर लेते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि हम कुछ queries के ऊपर बात करें। तो जैसे कैश की बात करते हैं, physical verification of cash, I think the simplest thing to do and which every auditor should be required to do. Of course, it should be done on a surprise basis. So somebody telling me कि भाई मैंने उसको कैशियर को बता दिया कि आज मैं शाम को चेक करने वाला हूँ कैश, तो it is as good as not checking the cash. The checking of the cash should be done on a surprise basis. Surprise would happen that आप मॉर्निंग में ब्रांच खुलने से पहले वहां पे पहुंचे, जो उन्होंने रात को क्लोज किया था मॉर्निंग में आपने चेक किया, that is the best way of checking the cash, which would actually be on a surprise basis. आपने कैशियर को बता दिया भाई जब तू क्लोज करने वाला हो मुझे बुला लियो, so that is not a surprise check, that is not effective actually, right? Then अगर वो फॉरेन करेंसी में डील करनी है ब्रांच, फॉरेन करेंसी भी वेरीफाई करनी है। अब कैसे वेरीफाई करनी है, कई बार मैं लोगों को बताता हूँ। तो एक हमने फिजिकल वेरीफाई किया, एक रजिस्टर मेंटेन होगा बैंक में, और उसको ऑल्सो चेक करना है सीबीएस में क्या बैलेंस चल रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे को फिजिकल कैश मिला हो, मेरे रजिस्टर से तो मैच कर रहा हो, मेरे सीबीएस का बैलेंस कुछ और हो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल। तो हमें सीबीएस बैलेंस से जरूर मैच। देन डेट मनी एक पैकेट होता है, जनरली फ्रेश पैकेट होता है, जिसको वो नंबर नोट करके रख लेते हैं। कभी वो मानते हैं कि इफ देयर इज एनी थेफ्ट और डकैती इन दी ब्रांच, तो वो कैश के साथ चला जाएगा, उसमें कोई स्पेशल मार्किंग नहीं करते, उसमें कुछ नहीं लिखते वो, एंड व्हेन इट इज यूज्ड थ्रू दैट नोटेड
noting of that number, they will be able to trace out. I don't know how effective it is, but generally banks have a policy of keeping a bait money. Then clean note policy ये हम बात करेंगे थोड़ी आगे भी. तो it is very important कि जो भी कैश हम कस्टमर्स को रीइशू करें, आज की डेट में every bank has a system of these machines which are able to segregate cash into issuable and non-issuable, and they are able to also check whether they are fake currencies. तो वो बहुत important that clean currency is given to the customers, and soil notes or any notes which cannot be issued. So we'll talk about some notes which cannot be reissued to the customers. They are not used for reissue. Then non-issuable currency जैसे बात करें, जैसे if you remember 100 के अशोका पिलर नोट्स आते तो बहुत पुराने सर, हरे से रंग के नोट्स हैं, हरे और पिंक कलर का होता था, बहुत पहले के नोट्स हैं. नाउ दीज नोट्स आर लीगल टेंडर. आप इसको पेमेंट देने के लिए यूज कर सकते हैं, पेमेंट लेने के लिए एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, पर बैंक को इंस्ट्रक्शंस है कि वंस दीज नोट्स गो टू द बैंक, दे कैन नॉट बी रीइश्यूड टू द कस्टमर. दे हैव टू बी कंपल्सरी सेंड बैक टू आरबीआई. ठीक है. ऐसे ही कोई नोट्स विद पॉलिटिकल स्लोगन्स हो उनके ऊपर, तो वो भी अलाउड नहीं है रीइश्यू करना, या जिनके वाटरमार्क पोर्शन डैमेज हो गया हो वो अलाउड नहीं है. प्री 2005 सीरीज के जो नोट्स हैं उनको रीइश्यू नहीं करना बैंक्स को. दे कैन एक्सेप्ट बट दे कैन नॉट रीइश्यू. देन नेक्स्ट आता है डुअल कस्टडी ऑफ कैश एंड कैश कीज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द कैश इज केप्ट इनटू, पर 2 पर्सन्स आर रिस्पांसिबल. तो प्रैक्टिकली 2 पर्सन ही कर रहे हैं या प्रैक्टिकली 1 पर्सन कर रहे हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. सो हम एक ब्रांच का ऑडिट कर रहे थे, कॉन्क्रीट ऑडिट. हमने उसको कैशियर को रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे को 10 की कुछ फ्रेश करेंसी चाहिए. तो उसने कहा सर अभी मंगवाता हूँ. उसने क्या किया कि पीएन को बुलाया और 2 सेट ऑफ कीज उसको दी कि अंदर वो रखी है ना वॉल्ट के अंदर 2, वो एक गड्डी निकाल के लिया हो सबके लिए 10 की. तो दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर अ कॉन्क्रीट ऑडिटर कि भाई आज आपने पीएन को 2 सेट ऑफ कीज दे दी, वो क्या करने वाला है, आज तो आपके लिए एक गड्डी निकाल के लाएगा, कल को वो क्या करके आएगा किसी को नहीं पता. सो इफ यू नोटिस एनी सच इंस्टेंस, तो इट शुड कम एज पार्ट ऑफ योर कॉन्क्रीट ऑडिट. Then proper accounting of cash in transit including doorstep banking facility. Independent verification by branch. The branch is expected to do an independent check like an auditor. So some person, third officer, which is not part of the cash handling on a daily basis, would do a checking of the cash balance independently of the auditor. So whether that is happening or not. Cash retention limit and cash related returns. So cash retention limit, of course, हम सबको पता है, एलएफएआर में भी हम रिपोर्टिंग करते हैं. तो आई थिंक द क्रिटिकल पॉइंट हियर इज कि भाई एक दिन ऊपर गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदर इट इज कंटिन्यूअसली मेंटेन अबव द कैश रिटेंशन लिमिट. तो देयर इज अ रिस्क देयर कि भाई ऐसा तो नहीं मिसयूज हो रहा कैश. तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर कैश इज गिवन in the morning without any check, without anything, and it is returned back in the evening, and the cashier gets some payment for giving that cash. So daily financing jisko kehte hain. Lot of markets are there where if you are able to take cash in the morning, you will be able to return back in the evening and you will be able to earn out of it. So इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा. तो अगर आपका कंटिन्यूअसली बैलेंस एक हाई बैलेंस मेंटेन हो रहा है ब्रांच में, तो देयर इज अ रिस्क कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ब्रांच में हो सकता हो रही है. तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. देन एटीएम एंड कैश डिपॉजिट मशीन. अब पहले तो एक एटीएम ही होता था जो कैश देता था, अब दोनों सिस्टम आ चुके हैं बैंक्स में. एक एटीएम है जो कैश देता है, एक कैश डिपॉजिट मशीन है जो कैश लेती है, और एक आजकल कैश रिसाइकलर्स भी आ गए हैं जो मशीन एक्सेप्ट भी करती है कैश और एटीएम की तरह कैश डिलीवर भी करती है. तो दोनों काम करती है. तो अगर ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ दोज मशीन्स, तो आपको उनके भी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना है. उसका जो कैश बैलेंस है उस मशीन का, वो ब्रांच की जीएल में मर्ज हो रहा होगा, उसको भी आपको वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. यू विल हैव टू फर्स्ट वेरीफाई वेदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच or it is responsibility of some third party which is looking after these transactions. ठीक है. तो this is there. Then counterfeit notes. अब ये counterfeit notes का जो issue है वो क्या है कि the process is that if a counterfeit note is given to the cashier,
कि कोई आया, किसी ने डिपॉजिट किया कैश, कैशियर ने चेक किया, उसमें कोई काउंटरफीट नोट निकल गया. The RBI circular says it cannot be returned to the customer. You cannot burn the note, you cannot destroy the note. तो प्रोसेस क्या है? You will take that note, you will stamp it. ये स्टैम्प का मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है. काउंटरफीट नोट, बैंक नोट इम्पाउंडेड, और ये आप साइन स्टैम्प करेंगे, ये आपको नोट के ऊपर लगाना है और एक एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को इशू करनी है कि आपका ये काउंटरफीट नोट निकला और ये हमने आपका नोट जब्त कर लिया. ठीक है, तो ये आपको करना मैंडेटरी है, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है. उसके बाद वो क्या कहता है, सपोज करो किसी कस्टमर ने पैसे जमा करे, उसमें एक काउंटरफीट नोट निकला, क्या उसकी कोई रिपोर्टिंग करनी है, कोई एफआईआर करनी है? वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है. तो उन्होंने क्या कहा, आफ्टर अगर 4 पीसेस या उससे ज्यादा निकलते हैं तो आपकी इसकी रिपोर्टिंग एफआईआर करने की जरूरत है. 4 नोट्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपको भेजनी है एट द एंड ऑफ द मंथ. 5 और मोर पीसेस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो उसमें इमीडिएटली एक एफआईआर फाइल करने की जरूरत है. ठीक है, और एक मंथली डाटा उनको शेयर करना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक रिपोर्टिंग आरबीआई को भी जाती है, मंथली रिपोर्टिंग है, नील है तो भी जानी जरूरी है कि कितने आपने काउंटरफीट नोट डिटेक्ट करे ड्यूरिंग द मंथ. ओके, नेक्स्ट इज म्यूटिलेटेड नोट्स. और व्हाट इज अ म्यूटिलेटेड नोट? 2 वर्ड्स आपने सुने होंगे, सॉइल्ड नोट्स एंड म्यूटिलेटेड नोट्स. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? तो सॉइल्ड नोट्स इज समथिंग जो री इशू नहीं होने कस्टमर को, क्योंकि वो कट खराब हुए हैं, गंदे हो गए हैं, फट गए हैं, तो दे आर कंसीडर्ड एज सॉइल्ड नोट. दे आर लीगल टेंडर, बैंक कैन एक्सेप्ट देम, but they would not be reissued to the customer. What is a mutilated note? So mutilated note वो है जो 2 से ज्यादा टुकड़ों से बना है. एक नोट है जिसमें 2 टुकड़े हुए हैं, इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ सॉइल नोट. उसकी फुल वैल्यू है, उसको बैंक को आप देंगे, बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम. अगर उसके 2 से ज्यादा टुकड़े हैं नोट और वो चिपका रखे हैं आपने, तो उसको हम क्या देते हैं, म्यूटिलेटेड नोट. या वो नोट जिसका कोई एसेंशियल पार्ट मिसिंग है, कुछ हिस्सा मिसिंग है नोट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटिलेटेड. अब आपने सुना होगा सर इसमें कुछ ऐसा होता है कि म्यूटिलेटेड नोट में डिसाइड करना होता है कि ये फुल वैल्यू का नोट है, हाफ वैल्यू का नोट है, या इसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो इसके देयर आर नोट रिफंड रूल्स 2009. इट वाज अमेंडेड इन 2018 आफ्टर दिस न्यू नोट्स वर सर्कुलेटेड. जो अभी नए नोट्स 500 और 2000 के आए, तो उसको टेक करने के लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए 2018 के अंदर, और उन्होंने इसको अमेंड कर दिया. तो यू शुड बी अवेयर कि भाई कौन सी फुल वैल्यू है, कौन सी हाफ वैल्यू है, कौन सी नो वैल्यू, राइट. और एक आपको नोटिस लगाना होता है बैंक को कि सॉइल म्यूटिलेटेड नोट्स एंड कॉइन्स आर एक्सेप्टेड एंड एक्सचेंज हियर. एक DN1, DN2, DN3 करके 3 फॉर्मेट है. DN1, DN2 और DN3 एक रजिस्टर है. DN2, DN1 और DN3 फॉर्म्स हैं. डेलिबरेटली कट नोट्स एक का कंसेप्ट देते हैं. डेलिबरेटली कट नोट्स क्या, किसी ने जानबूझ के नोट को काटा है किसी पर्टिकुलर वे में, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है सर. उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको अगर डेलिबरेटली कट किया गया नोट को. अगर किसी नोट के ऊपर स्लोगन्स लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल या रिलीजियस मैसेजेस लिखे गए हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है सर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार हम देखते हैं एक्चुअली में कि लोगों ने, मुझे याद है एक ब्रांच के अंदर एक कस्टमर कैश डिपॉजिट करता था, तो उसने अपनी एक स्टैम्प बना रखी थी जय श्री राम करके, और वो स्टैम्प लगा के ना नोट के पहले नोट पे और लास्ट नोट पे जय श्री राम का, और वो जब डिपॉजिट करता. So we then pointed out to the branch कि भाई as per this policy, because now it has a religious message installed on it, तो ये note would become a 0 value. तो फिर उन्होंने उस कस्टमर को बुलाया, इन्फॉर्म किया कि भाई आगे से हम आपको, या तो आप डिपॉजिट ना करें ऐसे, और आप डिपॉजिट करेंगे तो इस नोट की हम आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे. तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. समटाइम्स वी आर नॉट इवन अवेयर कि इस तरह का कोई रूल है हमारा आरबीआई का.
अच्छा, एक बड़ा important aspect है when we are talking about cash, which sometimes I have seen people not being aware of. So there is a master circular on frauds by RBI. Of course, fraud is an area which is a very concerning area for banks, basically because India के अंदर जितने financial frauds होते हैं, उसका more than 50% banks के अंदर होते हैं. तो it becomes a very very concerning area for banks. तो उसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है रिजर्व बैंक की, वो कहता है इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, राइट, यू मे फील कि भाई बैंक की वो गलती नहीं है, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, देयर इज नो इंटेंशन टू डिफ्रॉड द बैंक, देन ऑल्सो इट इज मैंडेटरी टू बी रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड. नो चॉइस. Any cash shortage, including in a ATM, if there is a cash shortage exceeding 10,000 rupees, it is mandatory to report it as a fraud. And suppose you went for a surprise check in the morning. When you verified the cash, you find out that there is a cash shortage exceeding 5,000 rupees. And it was not reported the previous day at the time of closing of the cash by the persons who are handling cash. Then it is mandatorily required to be reported as a fraud. No choice. कोई चॉइस ही नहीं है बैंक की कि वो कहेगी नहीं जी इसका ये जस्टिफिकेशन है, उसका वो जस्टिफिकेशन है. जस्टिफिकेशन बात की बात है. Only the fact that there is a cash shortage requires it to be reported as a fraud. तो ये चीज we should be aware of, because you must have read sometimes the banks getting penalized for non-reporting of frauds. So we should be aware of the process, how a fraud reporting is to be done. So there is a process within 3 weeks of detection of the fraud. There is an online reporting, FMR1 कहते हैं हम उसको, उसके थ्रू रिपोर्टिंग होती है फ्रॉड की. तो प्लीज इंश्योर दैट इफ इन केस एनी सच इंस्टेंस occurs at your branches, whether a fraud reporting has been done or not. If it is not so done, please bring it out through your report that they have failed to report a fraud. Okay. Then let's talk about the second area, which is, I think, after advances, one of the most critical area which the banks feel they have the maximum risk, which is AML and KYC, right? So we have a master direction, know your customer directions are there. They were last updated in May 10, 2020, 21. So this is a very important area. बहुत सारी चीजें हैं सर इसके अंदर. I'll cover some of the areas just to give you an idea. So one is KYC, and then there is a concept of a re-KYC. So now earlier we used to think KYC as a one-time activity कि भाई account open करने गए, उस time KYC document दिए गए, बात खत्म. Now RBI have said that it is not a one-time activity, is a recurring activity. How much time it has to be done again, it would depend upon the risk profile of the customer. So we'll discuss some of the areas which are important in this area. Cash deposit exceeding 50,000 in a bank in a single day. आपने single transaction किया, multiple transaction किया, total exceeds 50,000 rupees, PAN number is to be given, PAN or Form 60. Then foreign currency in cash and account credited of customer for amount exceeding 50,000 rupees. Issue of forex. So the bank is giving forex to a customer against payment made in cash exceeding 50,000 rupees. Any account opening transaction except for time deposit requires a PAN or a Form 60. Time deposit exceeding 50,000 rupees, including for renewal, requires a PAN or a Form 60. Right? Transactions which are prohibited above a certain limit. कौन से हैं? Bank should ensure the remittance of fund, whether way of demand draft, mail, telegraphic transfer, traveler's check, or retail sale of gold, silver, platinum of value exceeding 50,000 rupees is affected by debit to the customer account or against checks and not against cash payment. तो आप cash payment के through डीडी नहीं ले सकते, पे ऑर्डर नहीं ले सकते, आप आरटीजीएस नहीं कर सकते, एनईएफटी नहीं कर सकते. 50,000 या उससे ऊपर आपको कैश पेमेंट अलाउड नहीं है उसके लिए. देन एक उन्होंने लाया डिमांड ड्राफ्ट. इफ यू आर टेकिंग, उसके ऊपर परचेजर का नाम लिखना मैंडेटरी ऑन द फेस ऑफ द डिमांड.
देन अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं फॉर इनकैशमेंट ऑफ एफडी, अगर कस्टमर का बैलेंस एक्सीड करता है 20,000 और मोर इन एग्रीगेट इन हिज एफडी अकाउंट, तो ये कैश पेमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हिट होता है सेक्शन 269T ऑफ द इनकम टैक्स सेक्शन. देन customer is giving forex, wants the payment in cash. If the amount in case of a resident exceeds USD 1,000 or non-resident के केस में USD 3,000, the payment cannot be made in cash. ठीक है. Issuance of demand draft for rupees 20,000 and above has to be mandatory done by account pay crossing. उसमें account pay crossing होनी mandatory है अगर वो 20,000 या उससे ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने वेरियस सर्कुलर से उठाए. Now the KYC policy basically has 4 elements under the RBI guidelines: customer acceptance policy, then the risk management policy, customer identification procedures, and then the monitoring of transaction. शॉर्ट में समझते हैं सर. तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या कह रहे हैं कि इनिशियली when the first time a customer is made for the bank, तो no account can be opened in the name of anonymous, fictitious or benami name. No account where CDD, customer due diligence or customer not complete due to non-cooperation, non-reliability of documents. CDD to be followed for all joint holders. ABC 3 के नाम से अकाउंट है, तीनों के लिए आपको CDD करना पड़ेगा. Mandatory information to be sought while opening and re-KYC. Optional या additional information is to be obtained with explicit consent. Customer should not be on the sanction list circulated by RBI. PAN obtained to be verified with verification facility. अगर कोई ई डॉक्यूमेंट वो ले रहे हैं तो DSC to be verified as per the Information Technology Act 2000, and should not result in the denial of banking facility to general public, especially who are financially or socially disadvantaged. तो बेसिकली ये हो गया फर्स्ट टाइम व्हेन द कस्टमर इज कमिंग, तो जो आप डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, उसके प्रोफाइल को चेक करने के लिए, ये उसकी बात है, राइट. उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट वो क्या कह रहे हैं कि जी आपने कस्टमर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको आपको रिस्क कैटेगराइज करना है कि भाई ये लो रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर. So bank would formulate their own guidelines as to who will be considered as low risk, medium risk, high risk. किस पैरामीटर्स पे बेस होगा? कस्टमर्स आइडेंटिटी, सोशल फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब लेके आप लो मीडियम रिस्क हाई रिस्क को आप करेंगे. इससे आपका फर्क पड़ता है सर री केवाईसी के साइन पे हम बात करेंगे. तो लो रिस्क कस्टमर के लिए री केवाईसी आपको करनी है 10 साल बाद, मीडियम रिस्क के लिए करना है 8 साल बाद, हाई रिस्क के लिए करना है एवरी 2 years. And then monitoring of transaction in case of high risk customer, the monitoring would be high, and similarly medium के केस में कम हुई, low risk में और कम. Okay. Then identification procedures की वो बात करता है, तो वो कहाँ पे आपको लगाने हैं. commencement of account based relationship, जब कोई आप अकाउंट खोल रहे हैं, FD है, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, कोई आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं नॉन अकाउंट होल्डर के लिए, ठीक है. कहीं आपको डाउट है अबाउट ऑथेंटिकेसी, एडुकेसी ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, सेलिंग थर्ड पार्टीज प्रोडक्ट्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह कर रहे हैं, कोई 50,000 या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वॉक इन कस्टमर के लिए, इट कैन बी अ सिंगल ट्रांजैक्शन, इट कैन बी स्प्लिटेड ट्रांजैक्शन टोटलिंग टू 50,000 or more. Then banks believe that the customer is intentionally structuring transaction into a series of transactions below 50,000. So you're doing a transaction of 49,999 to avoid that 50,000 limit. No introduction. So introduction cannot be asked while opening the account. पहले banks इसको मानते थे कि mandatory है, आज की डेट में it is not required. And due diligence may also be done by a third party. Lot of banks are using third party providers for the purpose of doing this due diligence, but there are some conditions attached to it, and subject to that conditions only that due diligence may be carried out by third parties. Okay. Then officially valid documents को क्या करें? Proof of possession of Aadhaar number. So sir, Aadhaar number per se देना mandatory नहीं है sir. So they can do a verification through other means also, right? And rather Aadhaar is one of the
the most riskiest identification document to be given to the bank. And sometimes people are surprised when I tell them that it is not mandatory to give your Aadhaar number to the banks. Bank generally asks for it, and we assume that it is required to be given. It is not so, sir. तो आधार का अगर आप देखेंगे, there is a Supreme Court judgment also which says, and only when you are taking some kind of a benefit from the government, कोई सब्सिडी ले रहे हैं, कुछ इस तरह का कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो then आधार नंबर is mandatory. Otherwise, you have a choice of not giving the Aadhaar number to the bank. Okay, sir. You can give other proofs, which can be passport, driving license, voter identity cards, job card issued by NREJ, then national population register, और कोई डॉक्यूमेंट जो आरबीआई डिसाइड करे. एंड अगर उसके अंदर प्रूफ आपका एड्रेस का उससे ही हो जाता है, वेल एंड इनफ. अगर आपका एड्रेस प्रूफ उसमें अलग है, मतलब आपको हो सकता है एड्रेस अपडेटेड ना हो उसमें, तो यू कैन गिव यूटिलिटी बिल, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट्स, पेंशन सर्टिफिकेट, फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ अकोमोडेशन एक्सेट्रा, ये सब प्रूफ्स दिए जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेस प्रूफ. बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट्स में उन्होंने कहा कि भाई रिलैक्स केवाईसी है, और उसके अंदर फिर उन्होंने लिमिट लगा दी कि भाई इससे ज्यादा के आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. देन किस किस के डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने हैं, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के करने हैं, जॉइंट होल्डर्स है तो जॉइंट होल्डर्स के करने हैं, कंपनी है तो बेनिफिशियल ओनर के करने हैं. बेनिफिशियल ओनर उन्होंने कैसे डिफाइन किया, जिसका 25% या ऊपर का शेयर्स में कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी में शेयर है, या जो कंट्रोल करता है, और कंट्रोल को उन्होंने डिफाइन किया जो राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस. तो वो बेनिफिशियल ओनर है, उसके भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उन्होंने 15% का बेंचमार्क रखा है. ट्रस्ट है तो उन्होंने कहा जी ट्रस्टी, बेनिफिशियरी 15% और मोर इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट, ये सारे कवर्ड. देन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर ज्यादा दिक्कत आती है हमें, क्योंकि उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट सिर्फ इंडिविजुअल के नहीं मांगते, उस कंसर्न के भी मांगते हैं, उस फर्म के भी मांगते हैं. तो उसमें कहते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए. बैंक कैन टेक अ कॉल and on the basis of a single document also they can open the account, but that is the call of the bank, right? Normal scenario, you have to submit 2 documents along with the document as an individual. You have to submit the documents of the business. उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकते हैं, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का हो सकता है, सेल एंड इनकम टैक्स का हो सकता है, सीएसटी, वैट, जीएसटी का हो सकता है, सर्विस टैक्स का हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स का हो सकता है, आईईसी हो सकता है, कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न जिसके अंदर आपने अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस का एड्रेस वो लिखा हुआ हो. क्योंकि जब हम रिटर्न भरते हैं, बिजनेस इनकम दिखाते हैं, तो हमसे वो पूछता है ट्रेड नेम, तो उसमें हमने ट्रेड नेम दिखा रखा है और उसकी हम कॉपी देते हैं, तो वो भी कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द प्रूफ्स. एंड एनी यूटिलिटी बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन, टेलीफोन एक्सेट्रा इन द नेम ऑफ द फर्म, दिस कैन बी कंसीडर्ड. Then periodical updation should be done. We have discussed this. Then FATCA and CRS, we are aware. If FATCA, if you are you give a declaration whether you are somehow a resident or a citizen of US. CRS in case you are a resident of some other country apart from US. Then suspicious transactions की वो बात करता है. तो ये सब चीजें हैं. अब इसके अंदर सबसे important है सर, I think which has created a lot of challenge for lot of business firms and even chartered accountants in certain cases. I remember a lot of cases where customers came to us, told us कि सर मेरा करंट अकाउंट बंद कर दिया, मेरे को नोटिस आ गया कि आपका करंट अकाउंट हम बंद करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया. So this is the basically the guidelines of Reserve Bank. ये एक फ्लो चार्ट है just to understand, because अपने आप में बड़ी अब कॉम्प्लिकेटेड सी बन गई है. तो ये क्या कहता है, the borrower approaches a bank for opening a current account. Does the borrower have a CCOD facility from the banking system? Yes or no? Yes. What is the aggregate exposure of the banking system to the borrower? If it is less than 5 crores, any bank can open current account, subject to there is an undertaking which the borrower has to give, that in whenever my limit would go beyond to 5 crores or more, I'll tell you, I'll give you a declaration that मेरी लिमिट 5 करोड़ ही उससे ऊपर हो गई. ठीक है. तो अगर आप 5 करोड़ से नीचे हैं आपका एक्सपोजर, जो कस्टमर खोलने जा रहा है करंट अकाउंट, तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है.
फिर एक उन्होंने स्लैब बनाया 5 करोड़ टू 50 करोड़, और एक उन्होंने स्लैब बनाया 50 करोड़ से ना, ठीक है। तो 5 करोड़ से नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 5 to 50 देयर इज अ लिमिटेशन, 50 एंड अबव देयर इज फर्दर मोर लिमिटेशंस, ओके। तो उन्होंने कहा आपका सीसीओडी अकाउंट है, हाँ है, 5 करोड़ से नीचे आप करंट अकाउंट खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर है, any one of the bank which the customer has CCOD facility can open current account, तो जिसके साथ आपकी CCOD फैसिलिटी है उसी के पास करंट अकाउंट खुलेगा, और वो भी जब जब उसका 10% से ज्यादा का एक्सपोजर हो। तो सपोज करो कस्टमर का एक्सपोजर 40 करोड़ का है, तो 40 करोड़ में जिसका 4 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर होगा वो ही करंट अकाउंट खोल पाएगा, सिर्फ एक बैंक, ठीक है। अदर लेंडिंग बैंक्स कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट, सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। कलेक्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट्स आ सकते हैं, डेबिट जो होगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है कि वो करंट अकाउंट के अंदर या सीसीओडी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकता है विद इन 2 डेज। उस कलेक्शन अकाउंट से जिस बैंक में वो अकाउंट खुला है, ना तो वो कोई इंटरेस्ट रिकवर कर सकता, ना उसने कोई लोन दिया तो उसके पैसे रिकवर कर सकता, सिर्फ उस करंट अकाउंट से, उस कलेक्शन अकाउंट से रिलेटेड कोई चार्जेस है तो वही वो उसको डेबिट करता है, ठीक है। नॉन लेंडिंग बैंक्स कैन नॉट ओपन अ करंट और अ कलेक्शन, ये है सीसीओडी अकाउंट 5 करोड़ से ऊपर है तो, ठीक है। 5 करोड़ से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सपोज करो आपका सीसीओडी अकाउंट ही नहीं है बट आपकी लिमिट्स हैं, तो उसने कहा आपका सीसीओडी अकाउंट नहीं, नो, यहाँ पे नीचे आ जाइए, व्हाट इज द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू द बोरोवर, ठीक है। लेस देन 5 करोड़ कोई भी अकाउंट खोल सकता है, 5 करोड़ और मोर बट लेस देन 50 करोड़ सबसे नीचे आ जाइए, एनी लैंडिंग बैंक कैन ओपन दी करंट अकाउंट, क्योंकि आपका सीसीओडी नहीं है तो ऑपरेटिव अकाउंट कहीं नहीं चल रहा, टर्म लोन्स अकाउंट ही चल रहे हैं, उस केस के अंदर आपका 5 से 50 करोड़ के अंदर कोई भी लैंडिंग बैंक, किसी ने भी जिसने आपको लिमिट दे रखी है वो आपका करंट अकाउंट खोल सकता है। नॉन लैंडिंग बैंक्स कैन ओनली ओपन कलेक्शन, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। और 50 करोड़ से ऊपर है तो करंट अकाउंट खुल ही नहीं सकता सर, सिर्फ एक एस्क्रो अकाउंट खुल सकता है। एस्क्रो अकाउंट किसी लैंडिंग बैंक में खुलेगा और सारे जितने लैंडिंग बैंक्स हैं वो मिलके वो एस्क्रो अकाउंट को के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो एक एस्क्रो एग्रीमेंट होता है। जब भी एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है तो वो एस्क्रो एग्रीमेंट में जितने लेंडर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नॉन लैंडिंग बैंक कैन नॉट ओपन करंट और कलेक्शन। तो ये इस तरह का एक फ्लो चार्ट है सर, जो आपको भी आई एम श्योर विद योर क्लाइंट्स दिक्कत आ रही थी। एंड दूसरी चीज, व्हेन एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर वी आर वेरीफाइंग, वी हैव टू वेरीफाई स्पेशली व्हेन अ न्यू करंट अकाउंट इज बीन ओपन एंड फॉर द एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट्स वेदर दिस सर्कुलर हैज बीन फॉलोड, ठीक है। सेकेंड आता है सर सीसीओडी फैसिलिटी के लिए, अंदर भी उन्होंने कहा कि कौन कौन सीसीओडी फैसिलिटी दे सकता है, तो ये सर्कुलर उसकी भी बात करता है। अब वो कहता है कि अगर आपका 5 करोड़ से कम का एक्सपोजर है कोई भी बैंक आपको सीसीओडी दे सकता है, 5 करोड़ से ऊपर का है, अब उसमें वो कह रहा है कि बैंक का एक्सपोजर जो है 10% या उससे ऊपर का है, यस, तो वो सीसीओडी फैसिलिटी दे सकता है। अगर उसका 10% से कम का एक्सपोजर है उस कस्टमर को, तो वो सीसीओडी फैसिलिटी कैन नॉट बी अवेल्ड, और ये कलेक्शन अकाउंट ही खोल पाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है, rather than going through the detailed guidelines, I think that is the best way to understand the guidelines which are there, applicable to both us as opening current account or our customers, our clients, and as a concurrent auditor also we have to keep this in mind. सर बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सर एक्चुअली आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस चार्ट, मेरी तरफ से कोई एडिशनल वो मेहनत नहीं है इसमें, सिर्फ मैंने उसको निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। एक इसके अंदर सर बड़ा एक दिक्कत आ रही थी करंट अकाउंट के केस में, क्योंकि जब ये सर्कुलर इनिशियली आया इसमें एग्जम्पशंस नहीं थी। अब क्या है, बहुत सारे केसेस में आपको अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं करंट अकाउंट्स बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ सम नेसेसिटी, बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि इन केसेस के अंदर आप करंट अकाउंट्स खोल सकते हैं, ये गाइडलाइंस आपको नहीं रोकेगी। किन केसेस में, जैसे रेरा का अकाउंट खोलना है आपने, सो यू कैन ओपन अ रेरा अकाउंट, उसके ऊपर ये
गाइडलाइंस अप्लाई नहीं करें। आपको कोई नोडल या एस्क्रो अकाउंट खोलना है, आप पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, तो एज पर लॉ जो उनका गाइडलाइंस है उसके अंदर ही उनको एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होता है, तो वो आप खोल सकते हैं। आप कोई आईपीओ ला रहे हैं, एनएफओ ला रहे हैं, एफपीओ ला रहे हैं, शेयर बायबैक कर रहे हैं, डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर कर रहे हैं, तो अगर आप लॉ की गाइडलाइंस देंगे तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होता है, Yes. तो वो आप खोल सकते हैं। देन अकाउंट्स अंडर फेमा, जैसे कई जगह पे अकाउंट्स हैं फेमा के अंदर कि वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि आपको अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एलओ के अंदर वो कहता है हर एक एलओ का एक अलग अकाउंट मेंटेन होगा, तो उन केसेस के अंदर आप अकाउंट खोल पाएंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, स्टैट्यूटरी ड्यूज एक्सेट्रा, तो आपका कोई अकाउंट ऐसी बैंक में है जिसके अंदर से वो पेमेंट नहीं हो पा रही टैक्सेस की, स्टैट्यूटरी ड्यूज की, तो आप किसी और बैंक में जो ये फैसिलिटी आपको दे रहा है उधर ये अकाउंट खोल सकते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं तो उनको एक अलग अकाउंट खोलना पड़ता है। कैश इन ट्रांजिट, कैश रेप्लिशमेंट एजेंसीज है, इनको एक अपना एक स्पेसिफिक अकाउंट खोलना पड़ता है जिस बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से कोई आपका कोई बैंक ने लोन दिया किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए और उसके कैश फ्लो को मॉनिटर करने के लिए वो एक अलग अकाउंट खोल रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए ही सिर्फ, तो वो खोल सकता है। इंटर बैंक अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, अकाउंट अटैच बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी, कोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा, तो उस केस में वो सेपरेट अकाउंट खोल सकता है क्योंकि उसको ओरिजिनल अकाउंट हो सकता है उसका ब्लॉक हो गया। तो ये सब एग्जाम्पशंस उन्होंने दी हैं, and which is very important, very necessary, very much required with these strict guidelines of not opening a account. नेक्स्ट सर आते हैं हम, हमारे पास अच्छा टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। जो जो क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हो तो आप सर प्रदीप जी आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप पूछ सकें बीच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। देन डॉर्मेंट अकाउंट्स की हम बात करते हैं। तो डॉर्मेंट अकाउंट्स में ऑफ कोर्स वी आर अवेयर दैट इन केस अकाउंट बिकम्स अ डॉर्मेंट, जनरली 2 years का पीरियड होता है, आफ्टर व्हिच फॉर नो ट्रांजैक्शन विद इन दैट पीरियड ऑफ 2 years कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस, the account becomes a dormant account. In case it has to be made active, then a request letter is to be given along with the KYC document and generally requires a approval of a branch head etc. Right? Very important क्योंकि इन केसेस में फ्रॉड्स बहुत सारे हुए बैंकिंग में, तो दिस काइंड ऑफ प्रोविजन नाउ कम्स। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है सर कि सपोज करो आपका एक सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर एक फिक्स डिपॉजिट लिंक्ड है, उसका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट उसमें क्रेडिट हो रहा है सेविंग अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्या वो अकाउंट डॉर्मेंट होगा या नहीं होगा? तो आरबीआई कहता है कि वो डॉर्मेंट नहीं होगा, बिकॉज जो वो मैंडेट दिया गया कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मेरे सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, कस्टमर का मैंडेट है, तो दैट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इवन व्हेन इट इज डन बाय द सिस्टम would amount to a customer induced transaction, the account would not become a dormant. इसी तरह कोई डिविडेंड आ रहा है शेयर्स का, तो वो भी कस्टमर इंड्यूस माना जाएगा और अकाउंट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ डॉर्मेंट। पर कोई सर्विस चार्जेस डेबिट कर रहा है बैंक अपने, तो इट इज नॉट कस्टमर इंड्यूस, तो अकाउंट में स्लिप इनटू डॉर्मेंट। ओके, राइट। सो दिस इज देयर। अच्छा, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन ऑपरेटिव अकाउंट में नहीं लगता। डॉर्मेंट के लिए लोकेश जी डेबिट एंट्री का होना जरूरी नहीं है? नहीं सर, क्रेडिट एंट्रीज भी आ रही हैं तो भी बहुत है, तो भी काफी है। अच्छा, और नॉन मेंटेनेंस के लिए मिनिमम बैलेंस के लिए चार्जेस नहीं लगाए जा सकते डॉर्मेंट। चलिए, ओवरड्यू डिपॉजिट सर, अब इसमें एक छोटा सा चेंज आया सर। हम सबको पता है इफ द अकाउंट बिकम्स ओवरड्यू, फिक्स डिपॉजिट है, ओवरड्यू हो गया, तो हम सबको पता है टिल द डेट ऑफ पेमेंट उनको सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वी आर अवेयर, ये गाइडलाइंस बहुत पुरानी है। इसमें एक चेंज आ गया सर अभी जुलाई 2021 के, उन्होंने कहा है पेमेंट ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू एफडीआर और कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी मैच्योर्ड एफडीडी जो कम है, whichever is less, वो आप देखें, क्योंकि अभी रेट ऑफ टीडी जो है बहुत नीचे आ गए हैं। कई केसेस में तो बैंक्स के अंदर ये हालत है कि ये जो एफडी का रेट है वो जो सेविंग बैंक का रेट है उससे भी नीचे है।
तो उन केसेस में जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, जो सेविंग बैंक का रेट है, विच एवर इज लेस, वो आप कस्टमर्स को देना। सर लेकिन अभी जैसे एसबीआई वाले ने अभी हमारे अकाउंट में क्या की, उसने तो ऑटोमेटिकली हमारी 3 साल की अवधि थी, हमने एक लेने तो उसने बाकी 3 साल ऑटोमेटिकली बढ़ा दी करंट रेट से। सर वो जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो हाँ। आपने टिक कर दिया होगा ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे, Yes. तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू करता रहेगा। तो 2010 के उस टाइम तो ध्यान भी नहीं है, 12-15 साल। हाँ सर, वो जनरली तो होता क्या है, हम तो पूरा फॉर्म ही नहीं भरते, हम तो उसमें पीरियड लिखा, नाम लिखा और उसको दे दिया। अब वो अपने आप ही टिक कर रहा है, उसमें क्या टिक कर रहा है ओके वो। ऐसे होता है। हाँ, तो वो जनरली इन्होंने डिपॉजिट ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे डाल रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिन्यू हो जाता है और सेम पीरियड के लिए, हाँ हाँ सेम पीरियड के लिए। तो वो होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है सर, जो कई बार मैंने देखा ऑडिटर्स आर नॉट अवेयर, एंड व्हाट द आरबीआई सेज इज करंट अकाउंट स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ अ डिसीज इंडिविजुअल डिपॉजिटर। कई बार आप देखेंगे कि इंडिविजुअल नेम में करंट अकाउंट खुले होते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट में। बट अगर इस पर्सन की डेथ हो गई, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर की या सोल प्रोप्राइटर की, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट इसको इंटरेस्ट पे करना है कस्टमर को ऑन दी सेविंग बैंक रेट्स। ये करंट मैंडेट, अकाउंट में भी। हाँ जी सर, ये मैंडेटरी गाइडलाइंस है। तो अगर आपका बैंक पे नहीं कर रहा, तो यू कैन पॉइंट आउट दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ द आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, ओके। पैनल चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक्स। अब इसमें क्या है सर, प्रोसेस क्या है, बड़ा अच्छा प्रोसेस आरबीआई ने बनाया कि मिनिमम बैलेंस ब्रांच बैंक ने मेंटेन नहीं किया, कस्टमर ने मेंटेन नहीं किया, आप सीधा चार्जेस नहीं लगा सकते। First, you have to inform the customer that you have not maintained minimum balance, and that if you do not maintain the minimum balance within a period of 1 month, we would levy you with penal charges. अगर उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन नहीं होता, वो बैलेंस को सही नहीं करता, मिनिमम बैलेंस तक नहीं लेके आता, then the penal charges can be levied, and that penal charges also have to be proportionate to the extent of non-maintenance. Suppose करो उसका मिनिमम बैलेंस है 10,000, अब एक कस्टमर का तो बैलेंस है 9,500 रुपए और एक कस्टमर का बैलेंस है 1,000 रुपए, तो दोनों को सेम चार्जेस आप लेवी नहीं कर सकते, आपको प्रोपोर्शनेट टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन मेंटेनेंस उतने ही चार्जेस आपको डेबिट करने हैं, और आप नेगेटिव बैलेंस नहीं कर सकते अकाउंट में ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ चार्जेस। आप जीरो तक तो ले जा सकते हैं, पर नेगेटिव बैलेंस में नहीं ले जा सकते। तो ये सर, ये तो मेंटेन मेरे ख्याल से तो कोई नहीं करा सर, जो प्रोपोर्शनेट वाला बता सर रहे करते हैं सर, आई रिमेम्बर इन वन ऑफ द केसेस, मेरे माइनर बेटे का अकाउंट था, तो उसमें हमने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने चार्जेस वो अपना बढ़ा दिया मिनिमम बैलेंस, वो उसमें अकाउंट में यूज तो कुछ होता नहीं था, वो बैलेंस कम था, तो उन्होंने उसको डेबिट कर दिया, एंड व्हेन वी गेव देम दिस गाइडलाइंस दे हैड टू रिवर्स ऑल दी डेबिट चार्जेस व्हिच दे हैव टेकन। अगर आप देखेंगे आजकल एसएमएस आ जाता है सर आपके पास, अगर आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा ना, तो आपको बैंक इन्फॉर्म कर रहा है थ्रू एसएमएस। लेकिन प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं सर, वो नहीं ले रहे होंगे सर, तो यू कैन पॉइंट आउट थ्रू दी योर काउंटर ऑडिट रिपोर्ट इफ दिस पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ। ठीक है, उसके अलावा ये हम छोड़ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम ऑफर करते हैं ना सर, स्टाफ के केस में कर सकते हैं, उनकी एसोसिएशंस के केस में कर सकते हैं, रिटायर्ड बैंक स्टाफ में कर सकते हैं, स्पाउस ऑफ अ डिसीज मेंबर या रिटायर्ड मेंबर को भी दे सकते हैं, जो 1% एक्स्ट्रा वो देते हैं, और सीनियर सिटीजन को दे सकते हैं, पर एचयूएफ में नहीं दे सकते कि भाई मेरे एचयूएफ करता सीनियर सिटीजन है तो उसको नहीं दे सकते, या नॉन रेसिडेंट है, वो सीनियर सिटीजन है बट नॉन रेसिडेंट है, उसको भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। कई बार ये बैंक्स में मैंने गलतियां देखी हैं सर, कि वो नॉन रेसिडेंट को भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे देते हैं 1%, विच इज नॉट अलाउड। 1% है या 0.5%, जो भी उनकी पॉलिसी है, जी विच इज नॉट अलाउड। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, विच समटाइम्स अगेन पीपल आर नॉट अवेयर, अगर आपका कोई एफडी बना और वो जिस दिन मैच्योर हो रहा है उस दिन वो बैंकिंग डे नहीं है, ऑफ डे है, नॉन बिजनेस डे है,
तो जिस रेट पे वो एफडी बनी थी उसी रेट पे उसको इंटरेस्ट उस नॉन बिजनेस डे का मिलेगा, और जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन तक मिलेगा। तो सपोज कीजिए आपकी एफडी मैच्योर हो रही है ऑन सैटरडे, और वो सेकंड सैटरडे है, नॉन बिजनेस डे है, तो सैटरडे और संडे दोनों का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर को ऑन दी रेट कॉन्ट्रैक्टेड, जो एफडी का रेट है उसी रेट, और फिर वो मंडे को वो आप वो उसको चाहे रिन्यूअल करवाए चाहे वो बंद करे, जो भी कर सकते। ये केवाईसी रिन्यूअल की क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट बैंक की? मैंने बताया था ना सर कि लो रिस्क में 10 साल में करना है उनको री केवाईसी, ओके, और मीडियम रिस्क में 8 साल में करना है, और हाई रिस्क में 2 साल में। वो कैसे डिफाइन होती है, डिफाइन कैसे होती है रिस्क की? सर बेस्ड अपॉन दी कस्टमर प्रोफाइल, जैसे इसमें एक बल्कि एक और भी कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पीईपी, जिसको वेरी हाई रिस्क माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड करती है, जैसे जनरली बैंक्स क्या करता है कि जितने नॉन रेसिडेंट हैं उनको मीडियम रिस्क में तो लेता ही लेता है, जितने हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनको जनरली मीडियम रिस्क में जरूर लेगा, या जो कस्टमर्स पॉलिटिकली एक्सपोज होंगे तो उनको हाई रिस्क मिलेगा। इस तरीके से वो अपनी पॉलिसी डिसाइड करेंगे एज बेस्ड ऑन दी कस्टमर प्रोफाइल की किस तरीके से वो प्रोफाइल करेंगे। नहीं, जैसे हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं बैंकों के कि आप केवाईसी आपके ड्यूज है तो इसको रिन्यूअल कराएं, तब हाँ तो जी, हाँ, तो आपको जाना पड़ेगा सर। तो अब हम इसमें कौन सी वैसे रिस्क में आ गए, हम कौन सी रिस्क में आए हुए हैं? सर वो आपको बैंक बताएगा नहीं सर, वो बैंक का इंटरनल क्लासिफिकेशन, अच्छा, तो वो नहीं बताएगा। पर वैसे इसमें आरबीआई सर्कुलर क्या कहता है सर कि अगर आपके में इंडिविजुअल केस में कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, तो आप अगर अपनी ईमेल से, रजिस्टर्ड ईमेल से उनको ये मैसेज देते हैं तो दे शुड बी एबल टू एक्सेप्ट भाई देयर इज नो चेंज इन दी केवाईसी। बट जनरली हमने देखा कि बैंक वो एक्सेप्ट नहीं करता, बैंक नहीं इंसिस्ट करते। करता है कि भाई आप लेके आइए सारे वही हाँ सर, वो तो वही केवाईसी सिस्टम है। डॉक्यूमेंट्स, और फिर हम इसको करेंगे। वो सारा फॉर्म भरा फिल कराते हैं। इन्होंने सर सबको 2 साल में डाल रखा है, मेरे को लगता है हाई रिस्क में डाल रखा है, हर 2 हाँ, साल विच इज रॉन्ग सर एक्चुअली। हाँ विच इज अब रॉन्ग। वो एक्चुअली हमारे एमसीए के हिसाब से चल रहे हैं ना, एमसीए ने तो सबको वेरी हाई रिस्क में डाल रखा है, हर एक साल करवाओ केवाईसी डायरेक्टर्स को ना, तो वो कह रहे हैं कि जब एमसीए करवा सकता है तो हम भी करवा सकते हैं। वहाँ बहुत लोग कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो मैंने लाइटर साइड में कहा, बट एक्चुअली एक्चुअली उनको रिस्क कैटेगराइजेशन करना चाहिए विच दे आर नॉट डूइंग, या वो रिस्क कैटेगराइजेशन कर रहे हैं पर जो उनका ट्रिगर है सिस्टम में वो रिस्क से लिंक नहीं है, नहीं है तो जी, वो ये सभी बात केस में वो 2 साल में से रिस्क वो ट्रिगर कर देता है डीकेवाईसी। यस सर। ऐसी नॉमिनेशन है, विल स्किप दिस, देन कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हम ले लेते हैं सर। हाँ जी, आई थिंक ये सर प्रेजेंटेशन ये मिल जाएगा मेंबर्स को? हाँ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सर। राइट सर। लोन्स की सर हम बात कर ले अगर, इसमें 2-3 चीजें मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें करने की जरूरत है। एक तो कैलकुलेशन ऑफ डीपी, ये हमेशा एक इशू रहता है सीसीओडी के अंदर। हाँ तो जी, आपको अपना इंटरनल सर्कुलर देखना है बैंक का कि वो क्या कहता है कैलकुलेशन ऑफ डीपी। तो जनरली इट शुड बी ऑन पेड स्टॉक ओनली, इफ इट इज नॉट हैपनिंग ऑन पेड स्टॉक ऑफ कोर्स इट इज अ कंसर्न फॉर अस। पर कुछ बैंक की कुछ अपनी पॉलिसी है कि हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपकी बैंक की पॉलिसी है आपको जाना तो उसी के हिसाब से पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ यू हैव अ कंसर्न यू कैन रेज योर कंसर्न कि भाई ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बट यू विल हैव टू गो एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक। देन रिन्यूअल और रिव्यू, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती है कि भाई 180 दिन के अंदर आपका रिन्यूअल रिव्यू हो जाना चाहिए। बट व्हाट वी हैव सीन कि बहुत से बैंकों में ऐसा हो रहा है कि वो एक शॉर्ट टर्म रिव्यू मारते हैं 3 महीने का, फिर 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक वो कुछ नहीं करते, फिर एक शॉर्ट टर्म रिव्यू कर देते हैं। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर, दिस शुड यू शुड नॉट एक्सेप्ट, दिस इज समथिंग विच इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। देन इट मीन्स प्रैक्टिकली कि बैंक इज गोइंग ब्लाइंड, बैंक को कुछ नहीं पता कि मेरा कस्टमर क्या कर रहा है, उसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, और वो उस कंटिन्यू कर रहा है लिमिट को, विच इज नॉट। एंड यूज वेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन सीसीओडी, तो आपको वो जरूर ध्यान से देखना है। सबमिशन ऑफ पीरियोडिक इंफॉर्मेशन एमआईएस, आज की डेट में तो हम कारों के अंदर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
कि अगर कस्टमर की कारों में रिपोर्टिंग जा रही है और कस्टमर को खुद भी रिपोर्ट करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि अगर उसकी 5 करोड़ से ऊपर की कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं और उस केस के अंदर जो उसने फाइनेंशियल डाटा वहां पे सबमिट किया क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा विद द एक्चुअल डाटा इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। और कारों में तो लिमिट 5 करोड़ से ऊपर है सर, और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर कोई लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं की है, तो हर एक केस में मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। सर ये बताइए सर, जैसे कि एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर ये हमें हमारी जिम्मेदारी है, जैसे क्लाइंट ने बैंक के कस्टमर ने डाटा दे दिया तो वो बैंक से उसकी बुक से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, आर वी कंसर्न एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर? स्टेट्यूटरी की बात तो अलग हो गई। नहीं सर, बिल्कुल है सर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है ना सर, हमारे को उससे ज्यादा करना है, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने करना है एक्सेप्ट फॉर गिविंग एन ओपिनियन ऑन द ट्रूनेस एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट, उसको छोड़ के सब कुछ हमें कवर करना है। तो उसका क्या उसकी बुक्स देखने जाएंगे सर उसके ऑफिस में फिर अभी कि इसकी बुक्स में कितना स्टॉक है, डेटर कितने हैं? तो सर जनरली हम कॉन्करेंट ऑडिट की अगर बात करें तो उसके अंदर ना कहीं एक विजिट की जरूर बात करता है। एक तो मैनेजमेंट को खुद करना है, ब्रांच मैनेजर को, तो उसकी विजिट रिपोर्ट होनी चाहिए। और दूसरा एक कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत से केसेस में वो एक सर्कुलर ऐसी कुछ गाइडलाइंस डाल देता है कि कॉन्करेंट ऑडिटर को भी एक विजिट मारनी है साल के अंदर। सर वो विजिट होती है चाय पानी पीने के लिए, देखने की तो बिजनेस चल रहा है। नहीं सर, वो विजिट चाय पानी के लिए नहीं है। एक्चुअली उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ओवरऑल जाके देख रहे हैं कि वो बिजनेस जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक तो ये हाँ हो जी। गया। और दूसरा जो उसने स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है, आप उसको बुक से एक सरसरी तौर पे, मतलब आप पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट आप बुक से वेरिफिकेशन कर लेंगे कि भाई ये सब चीजें मैच हो रही है नहीं हो रही कहीं ना कहीं। तो बाद में उसे चेंज कर दिया स्टॉक, फिर कैसे करेंगे? सर वो तो देखिए अल्टीमेटली अगर आप रियली देखें तो आप वही कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं वही उसके कह रहा हूँ बियॉन्ड तो सर, आप क्या कर सकते पॉसिबल हो? नहीं है सर ये मतलब एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर एवरी, क्योंकि हम हर महीने स्टॉक लेते हैं सर ये तो नहीं सर, possible- मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेसिकली जी कि सर। देखिए हर एक महीने तो आप वेरिफिकेशन कर नहीं सकते, वो तो जी प्रैक्टिकली, वो तो फिर जो मॉनिटरिंग होती है जो बड़े अकाउंट्स की एक अलग प्रोसेस है जिसका, वो तो एक अलग बात है, पर अदरवाइज तो मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे हो नहीं सकती इतने अकाउंट्स की। तो बेसिकली द सिस्टम इज दैट वो अपने आप सबमिट कर रहा है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे से मैनेजमेंट विजिट कर रही है और उसको वेरीफाई कर रही है। और कहीं कहीं पे उन्होंने कॉन्करेंट ऑडिटर पे भी डाल दिया कि भाई आपको साल में एक बार विजिट करना है और देखना है बोरोवर अकाउंट। तो their expectation is that somebody is actually verifying at least on a quarterly basis कि भाई इंफॉर्मेशन सही है, बिजनेस चल रहा है और स्टॉक वगैरह मेंटेन है कि नहीं। राइट। ये सर किसी का क्वेश्चन आया कमल जी का कोई, फॉर सैलरीड पर्सन ओडी एक फैसिलिटी? है एक है कमल गर्ग जी हैं। इफ ए सैलरीड पर्सन वांट्स ओडी फैसिलिटी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट इफ पॉसिबल। राइट। सो बेसिकली सर कमल जी, ये जो फैसिलिटीज होती हैं जनरली, ये फैसिलिटीज जो होती हैं वो बैंक की चॉइस होती है कि वो किस तरह से ओडी फैसिलिटी देना चाहता है। बैंक जनरली क्या करता है कि जिनके सैलरीड अकाउंट उनके साथ हैं, ये जो बड़े गवर्नमेंट के हैं एम्प्लॉइज या कोई बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स हैं उनके पास, उनके अंदर वो कुछ एक अपना फॉर्मूला बना लेता है कि भाई बेस अपॉन दी सैलरी और बेस अपॉन कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि आप कितने साल आपको सर्विस करते हो गए, उस बेसिस पे वो डिटरमाइन कर लेता है कि भाई हम कितनी आपको ओडी फैसिलिटी या टीएल फैसिलिटी दे सकते हैं, किस पर्पस के लिए दे सकते हैं। तो वो आपको इंडिविजुअल बैंक्स के पास ही जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसके अंदर आपकी केवाईसी वगैरह हो जाएगी, आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह हो जाएगी। कई बार वो आपके जो एम्प्लॉयर है उससे वो कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भाई हमने इसकी लिमिट दे रहे हैं और आप इसका सैलरी अकाउंट चेंज नहीं करेंगे, कुछ इस तरह की वो रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और उस बेसिस पे वो आपको लिमिट ग्रांट करते हैं। इट कैन बी ओडी फैसिलिटी ऑल्सो, इट कैन बी अ टीएल फैसिलिटी, सो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। तो हर एक बैंक में जनरली इस तरह का होता है, पेंशनर्स के लिए भी होता है और सैलरीड के लिए भी होता है। देन एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। इफ समवन वांट्स टू एनी क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड, वी विल अलाउ। कितने को क्वेश्चन आते हैं मैं 5-10 मिनट में कवर कर लूँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिनिश करूँ पहले, क्योंकि आई थिंक 6:30 हो चुके हैं। हाँ 6:30 हो चुके हैं। जैसे दीपक जी आगे क्या, तो नहीं तो फिर दीपक जी भी आ चुके हैं।
अच्छा, अच्छा, तो मैं मैक्सिमम 5 मिनट इसको सर क्लोज करता हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आशु बंगा जी ने हैंड रेज किया है सर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज क्वेश्चन जरूर ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है उनका सर? अग्रवाल जी कर दीजिए उनको बोलिए allow। बोलिए गुप्ता जी बोलिए, गफ्फार जी बोल। हाँ जी बोलिए बोलिए, आशु बंगा जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने को अनम्यूट करिए। मैंने अलाउ कर दिया है, अब अपने को अनम्यूट करिए। जब तक सर आगे चलते हैं, जब तक वो अनम्यूट करते हैं। सर दो चीजें आपको मैं और बता देता हूँ, देन आई विल क्लोज। एक तो सर बैंक गारंटीज के अंदर ना मैं बहुत बार लोगों को बताता हूँ कि एक तो स्टैम्प ड्यूटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ प्लेस लाइक दिल्ली। आई रिमेम्बर वी वर ऑडिटिंग वन ऑफ द ब्रांचेस इन यूपी, दे वर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी एज पर द दिल्ली एक्ट, दिल्ली स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। दिल्ली के अंदर स्टैम्प ड्यूटीज जो हम स्टैम्प पेपर लगाते हैं बीजी के ऊपर, वो 100 रुपीज की है सर। और यूपी में जो है वो 0.5% ऑफ दी बीजी अमाउंट है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। तो हमने जब कैलकुलेट किया कि उन्होंने कितनी शॉर्टेज की स्टैम्प ड्यूटी की, तो सर दैट अमाउंट इटसेल्फ वाज रनिंग इनटू मोर देन 1 करोड़ रुपीस, जो हमने पिछले 6 महीने का अमाउंट निकाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जब बीजी को वेरीफाई करें तो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट को जरूर वेरीफाई करें। दूसरा सर, आरबीआई का सर्कुलर वांट्स यू टू दैट एवरी बैंक शुड इशू गारंटीज ऑन अ सिक्योरिटी फॉर्म सीरियली नंबर। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी रिसेंटली भी मेरे पास एक केस आया सर, जिसके अंदर एक गारंटी purported to be issued by some public sector bank has been issued, and now later on the bank is saying कि हमने ये गारंटी इशू ही नहीं करी, जबकि उस गारंटी के ऊपर बैंक के मैनेजर के भी साइन है और एक ब्रांच के और उसके डिप्टी मैनेजर के भी साइन है। एंड दी कस्टमर इज क्लेमिंग कि मैंने वहां पे ब्रांच में विजिट करके इसको वेरीफाई भी करवाया है, और उनकी ईमेल से वो वेरिफिकेशन का ईमेल भी आया है कि हाँ ये हमने जेन्युइनली वेरीफाई है और ये बैंक गारंटी हमने इशू। तो दिस टाइप ऑफ केसेस हैव बीन अकरिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट देन कि जब हम कॉन्क्रीट ऑडिट कर रहे हैं और अगर हमारी बैंक इशू कर रही है बैंक गारंटी ऑन स्टैम्प पेपर्स, जो जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे हैं, तो हम इसको रेफर करें कि भाई वी आर वायलेटिंग द आरबीआई गाइडलाइंस when we are not using security forms for the issuance of BGs, क्योंकि ये जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं हो रहा सर। देन एक एडवांसेस से रिलेटेड एक सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट सर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इफ यू हैव अ वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ मोर देन 150 करोड़ रुपीज, so it is mandatory that 60% of that working capital limit should be in form of a working capital loan, not in terms of CCOD। ये मैंडेटरी गाइडलाइंस है। कई बार हम अवेयर नहीं होते हैं बड़े केसेस के लिए ऑफ कोर्स, बट वी शुड बी अवेयर दैट इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी इन केस ऑफ, मतलब टर्म आप एक वर्किंग कैपिटल लोन देंगे, डिमांड लोन, और प्लस सीसीओडी देंगे, उसका उन्होंने मिनिमम परसेंटेज 60% रखा है फॉर अ लोन। तो ये आपको अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा चीजें बहुत सारी है सर, वी हैव लिमिटेड टाइम। आई एम मिसिंग फॉरेक्स। सिर्फ फॉरेक्स में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, एंड देन आई कॉल इट अ डे, दैट फॉरेक्स के अंदर सर कुछ स्पेशल अकाउंट्स खुलते हैं, जैसे एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीआरए अकाउंट्स। ये सर एक नॉर्मल ब्रांच में भी खुल सकते हैं जो फॉरेक्स ऑपरेट नहीं कर रहे। इस पे फीमा गाइडलाइंस लगती है। कई बार क्या होता है, जब हम एक नॉर्मल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रांच का जो सी कैटेगरी है, जो फॉरेक्स हैंडल नहीं कर सकती, तो हम मान लेते हैं कि भाई एनआरओ एनआरई बी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये तो फॉरेक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, विच इज नॉट ट्रू। So there are requirement in relation to NRO, NRE, then there is a Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, and इस तरह से RFC अकाउंट है, RFCD अकाउंट है, इस तरह से बहुत सारे अकाउंट है, EEFC अकाउंट है, जो एक नॉर्मल ब्रांच में, कैटेगरी सी ब्रांच में भी हो सकते हैं,
एंड इवन व्हेन यू आर ऑडिटिंग अ नॉन फॉरेक्स ब्रांच, ये ट्रांजेक्शंस आपको वेरीफाई करने जरूरी है और उसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है. So please, when you are doing an audit, keep that in mind, especially when you are not auditing a forex branch, that there might be certain areas of forex which are applicable to a normal branch. So with these words, I have taken more than the requisite time of which was given to me. So thank you so much for your patient hearing. I am here if you have any questions. Otherwise, thank you so much, Pradeep ji and Jayaprakash ji, for allowing me to cross over another 10 minutes of my time. Thank you so सर much. आपका बहुत ही अच्छा डेलिब्रेशन बहुत रहा बहुत अच्छा, हाँ डेलिब्रेशन बड़ा अच्छा रहा. है, तो मन करता है सुनते रहो. बहुत हाँ, अच्छा. डे टू बैंकिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है, और जो चीजें हम लेफ्ट ओवर कर देते हैं वो काफी सही तरीके से आपने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं. तो हम चाहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पीपीटी अगर हमको मिल जाए तो हम हाँ सर, सभी प्लीज लोगों में आई इसको शेयर. कन्वे कर दें, हाँ जी, अगर आप परमिट करते हैं तो. हाँ हाँ, मैं प्लीज शेयर कर दूंगा सर. हाँ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर सच ए वंडरफुल एजुकेटिव एंड इंटरैक्टिव डेलिब्रेशन. It was a really value addition for all of us. Now, our second speaker, Company Secretary Deepak Sharma ji is also with us, and he will uh, share his view on discussion on latest changes in company law and procedures. Before handing over the desk to Deepak Sharma ji, I take a privilege to introduce him. Deepak Sharma ji is managing partner of Messrs Sharma Jain and Associates. He is company secretary, a member of the Institute of Company Secretary and LLB, master in commerce. He has total 20 years year of experience in providing advisory services and legal and financial opinions to corporate, including multinational companies, LLP partnership firm. He has been the speaker on many subjects relating to corporate law, legal and secretarial audit, IBC listing and compliances. Deepak Sharma ji has been passionate in his academic pursuits in taking law classes in the ICAI, ICSI in the capacity of visiting faculty for CA intermediate and final. He has been the active speaker at various platforms of professional bodies. He is the member of expert committee on secretarial standard board of ICSI, and he has participated in more than 550 seminars, webinars, and workshops as a guest speaker on various platforms. Now, without taking much time, I hand over the desk to CA Deepak Sharma ji. We are again thankful for giving your valuable time for our members' interest. Thank you. Please, Deepak Sharma ji. अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ. Thank you so much for the opportunity. I thank the transmitter. This is the Vikas Marg Study Center. I'm thankful to Kamal ji, Pradeep ji, and especially Gopal ji, who gave this opportunity. Yes. So Gopal sir is there actually, always a smiling face, and the same face actually. We have to learn a lot of things from Gopal sir. And many of the learned, who are here actually. So today's topic is like GST for you actually, right? I'm not dealing in GST, but I'm a bit aware about GST, what is happening in this country. So likewise, we are also, on the same path as far as corporate law is concerned. So daily basis, there is a amendment, there is a circular notification, clarification, some sort of a, representation from respective Institute of Company Secretaries and Chartered Accountants of India. Recently, we have just concluding annual filing, but no relaxation was given. So I had the privilege to interact few of the MCA officials on this issue. So I think they don't want to just make it a habit as a professional. And one of the writ petition was filed before Honorable High Court, who categorically, asked our institute and your institute that why, these institutes are coming only, why not Chamber of Commerce like institutions are coming for the purpose of taking these grievances actually. So this is the, niche, and we all are aware that yes, corporate law has become of so much of demand in this corporate world that we can't miss even a single amendment
Why? Because that amendment may relate to policy, that amendment may relate to some sort of a technical issues which are dealt with in some sort of a e-forms which we have been just filing for our clients, respective clients. So before that, let's have a small discussion. What has happened when Companies Act 2013 has been there? So all of us know that first major amendment was there by way of a Companies Amendment Act 2015, and this was notified on 26th of May 2015. And when I briefly provide you some of the details of that major amendment, so you will definitely relish that after 7 years, for example, means when 2015 Companies Amendment Act 2015 just came, that it provided sort of a smoothness in the Companies Act 2013. It omitted the requirement for minimum paid up share capital at that time of incorporation. It made the common seal optional. It also done away with the requirement of filing a declaration by company before the commencement of your business. It also prescribed a specific punishment for deposits accepted under the Companies Act 2013, which were dealing with the defaulters in repayment to depositors. It also provided a prohibition of public inspection of board resolution filed in the Registrar of Companies registry. You can just correlate section 117 and 179, whereby a lot of board actions were required to be filed in MGT 14E form. So it was a enabling sort of a notification at that point of time, and it includes to provide a provision to prescribe threshold beyond which fraud shall be reported to the central government at that time under section 447 of the Companies Act. I have been a part of MC initiative to decriminalize the Companies Act 2013 at that time, represented by Institute of Company Secretaries of India, whereby initially 44 sections were there, which were there actually as a part of initiative of the Ministry of Company Affairs as a step forward that the Companies Act should be smoothened to give a breadth to the corporate world, especially to the new entrant from the foreign entity, just to smooth the flow of foreign funds actually into this country. That particular Amendment Act 2015 also provided special courts to try only those offenses that carry imprisonment of 2 years or more. So they were very major amendments which were introduced in 2015. And if you recall that time, whosoever has been practicing, whosoever has been actively doing the corporate law practice, so they will definitely come to know that it was a relaxation to the smoothness of the corporate law at that point of time, because section 185 loan to director, intercorporate loans and investment, section 186, maybe related party transaction 188. So these were few sections which were in they were not in consonance with the Companies Act 1956 at that point of time. Then another there was a hue and cry from the corporates, and Companies Act 2017 was introduced, where based on some company law and companies law committee report which was published somewhere in 2016, it carried out some of the major changes in the Companies Act 2013, and thereafter we witnessed Companies Amendment Act 2020, which was there in order to implement the recommendation of the company law committee, which was there in 2019. And these were the amendments to the Companies Act 2013, which had the approval of the cabinet on 4th of March 2020. So I can very well just take you to those amendments, but the important factor whenever I interact with the professional fraternity to connect you actually whenever you're dealing in a current financial year. So what to do, what to take into account, that what is the current scenario as far as corporate law compliances are concerned, how to take it positively. So for that purpose, may I take my PPT for the purpose of just have a very fruitful discussion with you all. So sir, Jayaprakash ji, can you give me rights to just You have right. You have right to share the screen. Thank you so much, sir. Thank you so much.
So is it visible Yes. now? Yes. So now it is changing also, sir. Pardon? Has it been changed, sir? ये क्या दूसरी स्लाइड आ गई है आपकी स्क्रीन पर? One slide is on the screen. What is showing, sir? Recent amendments in Companies Act 2013, CS Deepak Sharma, MCom, FCS LLB, It means practicing वो company जूम का एक secretary. प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम अपनी पीपीटी को एनलार्ज करते हैं वो चेंज नहीं लेकर आता है, सर. हम्म, ये कहीं कुछ प्रॉब्लम है जूम के अंदर. आई डोंट नो. नाउ अब दिखाई दे रहा होगा, सर. हाफ सेकंड आई है. राइट ना, सर? हम्म, ये प्रॉब्लम है. एनीवेज मैं इसको एक बार इसी तरह से लेके चलता हूँ. बट इज इट विजिबल, सर? क्योंकि कुछ लोग शायद यस. अपने फोन पर देख रहे हैं. नहीं, कंप्लीटली विजिबल. नहीं, कोई बात नहीं, सर. फोन वालों के लिए आप अभी से डिक्लेयर कर दीजिए. पीपीटी पे मेरा कॉपीराइट नहीं है. कुछ टीम ने बनाया है तो ये आपको मिल जाएगी. तो एवरीबडी विल हैव इट, द कॉपी ऑफ इट. The most important category of companies where chartered accountants and company secretaries are dealing with are small companies. And recently, the Ministry of Corporate Affairs has taken several measures in the recent past, which I have just described, starting from 2015, 2017, 2020, in the name of ease of doing business and ease of living for the corporate. And how far this initiative has been taken care of, welcomed by the corporates, I think we as a professional can very well understand. Now, these also included what I have just quoted. It included certain category of section, which is around 44 section, which have become now decriminalized. It means including the provisions related to section 135, very important, related to CSR, has become decriminalized. If you recall, Finance Minister speech in the Parliament way back in 2019-20, she categorically mentioned in the Parliament that non-compliance of the CSR provisions will attract criminal proceedings actually. And there was a great hue and cry all around. All around means all around from scratch to the top, that this should not happen. And after that only, those category of sections became decriminalized, where the section or punishment of the offense under that particular section can be a matter of compounding only before the adjudicating authority, including the ROC and the regional directors. So the decriminalization of these various provisions of the Companies Act 2013 and including LLP Act 2008, this extended the fast track mergers to startups, and they incentivizing incorporation of 1% companies, etc. So this includes all major amendments which have happened recently actually. Now recently there is a change, and big change, third time in the history of Companies Act 2013, that the definition of small company has changed a bit actually, and it will have a repercussion. I will discuss with you all, and you may have your questions ready under this section. Earlier, the definition of small companies under the Companies Act 2013 was revised when the originally framed under the Companies Act 2013, starting from 1st April 2014. And this threshold limit, while increasing their, paid up share capital criteria or the turnover criteria from 50 lakhs or 2 crores to 2 crores and 20 crores. It means the threshold limit for the paid up capital was increased from 50 lakhs originally framed to 2 crore, and the turnover level of 2 crores was extended to 20 crores actually. So there was a big relaxation, and a big chunk of company, big group of companies were again covered. Why? Because a special leverage has been given under the provision of Companies Act 2013 for the small companies in terms of compliances, the daily compliances, or maybe the dealing with the Companies Act 2013. Those small companies do have those liberties. Now again, this definition has been enlarged, and now it has been further revised by increasing the threshold limit of paid up share capital from 2 crore to 4 crore, and the turnover from 4 crore to 20 crores. And the limit requires this threshold limit to be covered as a alternate. It means any of the
paid up capital criteria or the turnover criteria may be attracted to notify a company that it is a small company. Now, I have to tell you that what has changed actually. A big number of companies have been the subject matter of definition as a small company, and the scene has changed. Now, these small companies represent some sort of a entrepreneurial and aspirations and innovation capabilities of lakhs of citizens as a startups, for example, and they contribute to the growth and employment. Now, this is the para which I have taken from the minister's speech out of the total speech given in the parliament, and wow, how beautifully they have given the logic behind increasing the threshold limit for the purpose of defining a small company. So the government has always been committed to taking measures which create a more conducive business environment for law-abiding companies. So they should be just at the safe, like compliances, daily compliances, or maybe filing, or maybe fees, whatever you say, but they are being saved actually. So this also includes a reduction of compliance burden on such category of small companies, my dear friends. So in your chamber also, I think multiple clients or number of clients must be under that criteria. So what has changed actually? Now, some of the benefits which these small companies were having actually, it includes reduction in compliance burden. And as a result of it, the revised definition for small companies, some of the advantages which are coming from the companies in 2013 only, it includes, that is, number one, there is no need to prepare cash flow statement as part of the financial statement. It means whatever you are preparing as a financial statement for a relevant financial year, you need not to prepare a separate cash flow statement, which is the criteria for all category of companies as a part of financial statement to be filed under section 129 and 124 of the companies in 2013. Second is, there is a big advantage of preparing and filing an abridged annual return, that is in the form of 7A. When you have seen currently, actually, there are two formats provided in the MCA portal, that is MGD7 and MGD7A. So MGD7 and MGD7A, there is a bit difference between those two. 7A represent as a abridged sort of a document which has been prepared out of MGD7 only, which is a very exhaustive document to be filled in. As far as annual return, the date is coming closer, that is 29th November for all the companies, so you should be ready for that. So small companies do have that liberty that they should file the abridged annual return on. Number three is, there is a mandatory rotation of auditor, which is there under section 139 for a individual 5 years, for a firm is 10 years. There is no as such requirement for the small companies to carry out this mandatory rotation. So there is a yet another advantage for the small companies. Number four, an auditor of a small company is not required to report on the adequacy of the internal financial control system and its operating effectiveness in the auditor's report, which is a specific part of his auditor report. So as a small company, it is at all not required. Now, next is holding of only 2 board meetings in a year in place of 4 meetings is provided for the small companies, and small companies can take the liberty of it that maximum they can have 2 board meetings, but there is no upper cap. They may have the upper number of or maybe extended number of board meetings, but there is a compliance if you have conducted only 2 board meetings in a year. So small companies do have that yet another advantage. Annual returns of the company can be signed by the company secretary only, or where there is no company secretary, by a director of the company. So he may file it actually, this abridged annual return. And there is a lesser penalties for the small companies. Whenever you see there is a categorization under the companies in 2013 as far as the penalties are concerned. So they are less in amount and less level of penalties have been provided for the small companies. So the definition which has changed actually the threshold limit from 2 crore to 4 crores and to the 40 crores turnover from 20, it has really given a breath
yes, professional compliances, professional certifications have been reduced to the extent where it is not at all required to be certified by practitioners, including the company secretary and the chartered accountant. Now, MCA has also notified the National Financial Reporting Authority, that is NFRA. There is a great hue and cry about this authority, but as far as NFRA Amendment Rules 2022 are concerned, which have already come into force on the date of official Gazette publication, that is 17th of June 2022. Now there is a bit confusion as far as attraction of Section 450, which provides adjudication of certain penalties. Actually, now can it be covered for the same? So where there is no specific penalty provided under this regulation actually. So this regulation has categorically provided that Section 450 need not to be referred. There is a specific mention about the penalty, and this penalty has been provided as a non-compliance. If there is a non-compliance of this provision or regulation as a contravention, the provisions will attract a penalty of 5,000, and where the contravention is a continuing one, a further fine of ₹500 for every day during the period of this contravention may be just attracted. So these rules have been amended to drop a reference to Section 450, whereas other provisions of the Companies Act 2013, wherever there is no penalty as such, you have to refer Section 450 for the adjudication of those penalties. So cap of 2 lakhs rupees, which is given under Section 450, is not attracted when we are talking about NFRA Amendment Rule 2022. So there is a bit of breadth actually given to the corporates as far as NFRA reporting is concerned. Now, whenever we as a auditor or maybe secretary auditor, statutory auditor, whosoever are dealing with the financial statements, so these financial statements are basically have to take care of primary sources for the disclosure of various financial information in the audited financial statement, and that may be from Indian Accounting Standards, Schedule 3, of course, that is of the Companies Act 2013, provisions of Companies Act such as certain sections like 185, 186 of the Companies Act, and some other specific law, MSME Act, that is of 2006. Then regulations, rules came in 2016. So for MSME disclosure, these are different references of act regulations by which we are governing our financial statement. So please keep in mind, because I will just touch upon certain points related to reporting in the financial statement, what has changed actually, which must be there post 1st April 2022, and these includes in the other amendments category. So this is what, if there is a question so far, we can take it actually for any other amendments or anything. Before going to the amendments actually or other amendments, I would definitely discuss about V3 option or V3 platform which has been provided by the ministry. Yes, recently, and we professions have been facing a lot of technical issues actually in dealing on the MCA portal, be it registration of a registered professional, or maybe shifting of profile to another profile, filing of my e-forms. The forms have become from PDF to web based. So these categories of grievances are there, which we maybe oftenly report to the Ministry of Corporate Affairs. So for that purpose, I think I would request you, Jayaprakash ji and Gopal ji, you may have a very separate session as far as V3 model is concerned. Why? Because a certain category of forms, around 11-12 forms, have become and have already become the part of V3 model, and certain other forms are in near future, maybe in the month of December, they will be become the part of V3 model actually. So we profession have to be ready as far as the timely and very smooth filing of those category of forms are concerned. Why? Because basically the charge rated forms or maybe deposit rated forms
or maybe some other forms which are related to the corporate actions or the event-based corporate actions are concerned. So stakeholders are really getting frustrated as far as V3 model is concerned. In light of that, I would definitely, mention one more thing, that technically our system may not be equipped to accept that model, actually, to accept that platform. So how you should be ready technically speaking. So I think out of your office, you may depute any of your office staff or whosoever is just dealing with that, so that you can configure your systems according to V3 model. So many of the professionals, in fact, I tend to interact many of the professions on daily basis, and I think more than 50-60% they are just stuck as far as technically capabilities of the system is concerned. So you can just keep in mind later on, you may just have it. I will be more than happy to interact more on V3S mode, actually. But yes, these amendments which I am just going to introduce in my PPT, they also have some effect of V3 mode. So please have your question ready. I am very happy, will be very happy to just reply you in context with the V3S mode, actually. Now, the major amendments which companies in 2013 with regard to CSR, we have to just touch upon in length, actually. Why? Because as a part of expert group of Secretary Standard of my Institute, Company Secretaries of India, we were responsible to create a document that is a guidance note on CSR. And this guidance note provided a very exhaustive clarification in line with the clarifications provided by the Ministry of Corporate Affairs itself. And the amendments have been so frequent as far as corporate social responsibility is concerned, that everyone has to face with, actually, that what is and how the CSR provisions with regard to unspent fund, or maybe evaluation process, or maybe filing, or maybe reporting of those CSR guidelines in my director report, or maybe in my financial statement, have to be given, actually. So before just touching upon that point, please read this slide with me, that every entity which is covered under sub rule 1 of rule 4 of companies corporate social responsibility amendment rule, that is 2021. Why? Because it was a major rule which came to effect the provisions of CSR, actually. So whosoever is, or whosoever the entity is, who intends to undertake the CSR activity, they shall register itself with the central government by filing the form CSR1. Thousands of the CSR1 have already been filed by various stakeholders, including Section 8 companies, charitable institutions, including societies and trusts. And this form is provided to be filed electronically and with the registrar of companies, respective registrar of companies, and it has been effective from 1st April 2021. It means the immediate financial year, that is 31st March 2022, was having the effect of this electronic filing. As an auditor, maybe as a statutory auditor, as a secretarial auditor, have to take care of it, actually, whether you have done it before 30th April 2021 or 30th September 2021, as the case may be, for the projects which were ongoing projects or which were having the effect of only single year project, actually. Now there is a proviso which provides that this amended sub rule shall not affect the CSR project or programs which have already been approved prior to 1st April 2021. So if you are clear that up to 31st March 2021, there was a project approved by the CSR committee, approved by the board, it will not be affected by the amendment of this particular rule. So the major amendment will be effective only post 1st April 2021, and it is now going on. It is also being attracted in the current financial year, that is 2022 and 2023 hours. Now, 5 types of entities which have been covered for registration in this particular CSR1. If you have the opportunity to interact with your this particular CSR1 form, you will be able to dig out those information, which includes the companies
established under Section 8 of the Companies Act 2013 with Section 12A and 80G registration under the Income Tax Act. Number 2, the registered public trust with Section 12A and Section 80G registration under the Income Tax Act. The 3 is the company established under Section 8 of the Companies Act 2013 or registered trust or registered society established by the central government or state government without having any sort of a recognition or registration under Section 12A or 80G, but they have the track record of 3 years. Registered societies with Section 12A and 80G registration, and entities which are established under an act of parliament or state legislation. When you look at number 3.1, I have just put it 1.1.1.1. Why? Because I have to give all equal weightage actually. So when you look at number 3, it is not having the effect of 12A or 80G. The company itself become a a CSR initiative provider. There may be a group company which is providing on its own these CSR projects execution actually. So you can have it actually. You can have it as far as the registration with the ROC and the CSR1 is concerned. These are the entities actually. Now, if any of the category of these entities are not established by the company except number 3 company, which I have just mentioned, or group of companies, then the entity need to have an established track record of 3 years in undertaking similar activities. That is provided under Schedule 7 also. What is Schedule 7? Section 135 is always read with Schedule 7. Schedule 7 provides exhaustive list of activities, CSR activities, which we may take or undertake actually. Now, copies of certification or registration of respective entities, self-attested authorized signatories, PAN card, mandatory attachment of these certificates under Section 12A and 80G need to be attached with this CSR1 form. Why I'm just thrusting upon this particular form? Because MCA has notified many mistakes in the earlier CSR1 form, which has been filed by various stakeholders. So you have to be very much cautious as far as the CSR registration or entity registration is concerned, my dear friends. Now, form CSR1 has to be digitally signed by the category of person, which includes director, trustee, when it is a trustee, chairperson or president of a secretary. It should be backed by a resolution of the trust, resolution of the society also, and maybe if the authorized signatory is some government entity, for example, so it has to be taking power from that legislature state or the parliament, and it has to be certified by you as a chartered accountant or by me as a company secretary, my dear friends. So it need to be just clarified in terms of filing of this CSR1. This CSR1 is final in terms of attachment. The the category of information which is there needs to be filled actually, which is not a very great work actually, but yes, it will ensure that CSR amount which has already been spent will be provided in this particular form. So a number shall be generated, and this can be just provided to the affected corporate or the corporates which are coming with some CSR funds actually. So always as an auditor also, you have to check on maybe over the board actually, that whenever the CSR related activities are to be undertaken. So if the corporate whose auditor you are, you have to take extra effort to dig out the credential of a entity, maybe society, trust or Section 8 company, whether they have complied with the provision of Section 135, read with this amended rule. So you have to just check twice about it actually. Now, this major changes also include a penalty which will be twice of the amount required to be transferred by the company to the fund, which is specified under Schedule 7. So PM Care Fund was one of the PM Care Fund was there, which was introduced during COVID period. And whenever you have a chance to transfer that amount to
that particular fund may be established under Schedule 7, you have to be very clear about it. If there is a non-compliance, for example, that you have been failed, actually, you have failed to transfer that amount to the specific fund, so penalty may be double of the amount which was supposed to be deposited in that particular fund, actually. And every officer, director, company secretary shall be defaulted, actually, and shall be penalized, for the purpose of non-compliance of this provision with regard to unspent corporate social responsibility account, actually. So I was just, about to touch upon that decriminalization process also, which has also decriminalized Section 135 related to CSR, but it has more substantiated and enlarged picture, actually, as far as the other provisions of the Companies Act 2013 are there. So there is no now criminalization under Section 135 non-compliance. So it has become a monetary and it can be compounded as well, my dear friends. Now, decriminalization of offenses have been the highlight during 2020-22. Why? Because already 2020 has given so many liberties to the stakeholders by providing decriminalization of certain offenses. And unofficially, I'm just, without taking any responsibility, the Ministry of Corporate Affairs is again working on more decriminalization processes under the Companies Act 2013, including Section 186. So decriminalization of these offenses being the main highlight of the Amendment 2020, and it removed punishment of imprisonment for certain offenses which were attracted as a consequence of non-compliance from imprisonment to just a penalty or fine. So there are reductions which have been made in fines and penalties that are liable to be paid. Now, decriminalization of offenses will also remove and reduce the burden of criminal classification of an offense under the statutes or crime of offense under the provision of Companies Act 2013. So those may be under Section 39, 62, 42, 73 section, maybe 139, 135, 149, and 186. So these were the criminal one, actually. So now, after having the effect of this, please be clear that decriminalization has happened. So during COVID period also, 2021, 22 and 23, there were certain conditions whereby the activities which were undertaken in pursuance of a normal course of business of the company, which were engaged in research and development activity on new vaccine, drugs and medicines devices in the normal course of business, they have been provided up to 2020-23. So in your audit report and during your audit, if you come across any of the CSR fund which has been utilized for these activities, please be clear that this has been provided for 3 financial years, starting from 21, then 22, which is a relevant year, now the current financial year, 23. This may be further extended, but there is no as such further extension as far as 22-23 is concerned. So current financial year is the last financial year where your activities which have been there, engaging yourself, your company in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in the normal course of business have been just, provided under Schedule 7 and as an exception to Section 135. So any activity which has been undertaken by the company outside India for training of Indian sports personnel who are representing any state or union territory at national level or maybe our country at international level, those have also been covered under this CSR initiative. Now, there is a bit call from the engagement of international organization for CSR designing. Our country is lacking in terms of evaluation entities actually who can evaluate our CSR projects. So there is a bit cry in the corporate world. So the company now may engage international organization. Rule 2 of the said rule has provided the categorization of those international organizations who will design and monitor and may evaluate the CSR projects or large projects like Navratna companies and big companies, or maybe programs or the CSR programs as per the CSR policy framed. And there may be a capacity building program
of their personal as far as CSR is concerned. So there was many changes in the CSR. Why I'm thrusting upon? Because there is a sequence of amendments in the CSR, and what I have just shown you is the crux which relates to your audit trail also. You have to be very cautious in terms of auditing your auditing in terms of taking care of these CSR and funds thereof and compliance thereof under section 175. CFO certification was introduced as a head of finance. So certification of CFO as a responsibility of the board to monitor the implementation of ongoing CSR projects shall become now necessary, and he shall certify to the effect that yes, the CSR fund and spent of CSR fund has been in line with the provisions of the Companies Act 2013. Now, reporting about CSR in financial statement, how it is to be given. There is a format which has been provided under the rules, which need to be attached with the director report also. But as an auditor, what you have to, that in the financial statement has to be provided. So wherever section 135 is applicable, the amount which is required to be spent by the company during the year has to be provided. Amount of expenditure which has actually been incurred has to be provided. And shortfall at the end of the year, if any, has to be provided. Total of previous year's shortfall, what is the reason for a shortfall, has to be substantiated by the board of directors, my dear friends. Now, further, the reason for shortfall, apart from that, the nature of CSR activities has to be integrated in your auditor report. So details of related party transaction, for example, so contribution to a trust which is being controlled by the company in relation to CSR expenditure as per the relevant accounting standard has to be, fully disclosed in your financial statement. And where a provision is made with respect to a liability which has been incurred by entering into a contractual obligation of a corporate, the movement in the provision during the year should be shown separately in the financial statement. So this is how you have to be very clear about your duty as a statutory auditor, that what need to be incurred, included, and what need to be just excluded actually. Now, these are major amendments which have come into effect actually as far as my financial statements are concerned, my auditor responsibility is concerned, my compliances with the regulatory entities are concerned. So these major amendments which are there to effect the change in Schedule 3 of the Companies Act 2013 now may be categorized. How? Because Section 467 of the Companies Act is very clear where they can just make amendments further to amend Schedule 3. So from 1st April 2021, the summarized form has been provided in terms of various points. Now let's discuss one by one what are those points which are relevant for your auditor's report. Registration of charges of satisfaction with the register of companies. You may come across many companies which have failed to register their charge, or maybe to register their charge relating to satisfaction actually. And if there is a unreasonable delay, you may not have the option to file it. Why? Because there is no optional amendment provided under the MCA portal. Now, where any charge or satisfaction of charge yet to be registered with the ROC beyond the statutory period of 30 days, now details and reasons thereof shall be disclosed in your auditor's report, and at the same time these are to be reported into notes to account of the financial statement. Based on that, you will also have a reporting responsibility as a auditor. Compliance with regard to number of layers of companies, many a times actually, why? Because you cannot go beyond 3 layers of companies actually under the provisions of Companies Act. But what happens actually, and why this amendment was necessary to be introduced actually, that whereas the company has not complied with the number of layers which have been prescribed under clause 87 of section 2 with regard to the companies with having the restriction of layers, rules 2017, the name and sin of companies beyond the specified layers and the relationship or extent of holding
of the company in such downstream companies shall be disclosed. If you have gone above the 3 layers mechanism provided under section 282 subsection 87, then please report the name and SIN number of that company that it has crossed that layer. It has just broke the layer system provided as a provision under section 2 subsection 87. So this is what you have to just go beyond your audit preview and tackle this critical analysis of multiple layers of companies. And after if you recall, after 2016-17, when lakhs and lakhs of companies have become abundant, have been striked off by the Ministry of Corporate Affairs in absence of filing of the annual filing, maybe attraction of section 164. So now it has become inevitable that the layers or the multiple layers which are also going across the border of our country must be traced and must be reported in my financial statement. So this is what you may have some questions over this issue. Please raise your issue with regard to layers of companies, my dear friends. Now there are certain ratios which are to be disclosed. Now these ratios may be like for example current ratios, debt equity ratios, debt service coverage ratios, return on equity ratios, inventory turnover ratios, trade receivable turnover ratios, trade payable turnover ratios, net capital turnover ratios, net profit ratios, return on capital employment, and return of investment, my dear friends. It means whenever there is a disclosure of ratios, the companies may be divided into 4 parts. For example, basis on profitability, basis on liquidity, basis on turnover, and basis on solvency. So whenever you are analyzing in your financial statement these ratios, in your report you are analyzing these ratios. So on the basis of profitability, the net profit ratio, return on capital ratio, return on equity ratio, and return on investment ratios can be just taken care of by you as an auditor. When you are taking the basis of liquidity, then current ratio may be irrelevant for you. If you are taking turnover based ratios, so inventory ratios, trade receivables, trade payables ratios, and net capital ratio may be taken care of. As far as solvency ratio is concerned, so debt equity ratio, debt service coverage ratio, these can be there, my dear friends, as a part of these ratios actually. Now, as far as these ratios disclosure is there, the specific disclosure has to be there in your financial statement, and at the same time you have to justify the calculation of those ratios from the conventionals of figures which have been provided by the board of directors in their balance sheet, actually, your financial statement. Now, number 4 is regarding compliances with the approved scheme of arrangement. What are those actually? So whenever there is a scheme of arrangement which has been approved by the competent authority may be a regional director, for example, as a fast track merger, or maybe a honorable bench of national company law tribunal, taking care of section 232, section 237 of the Companies Act with regard to these mergers. So the company shall disclose that the effect of such scheme of arrangement have been accounted for in the books of accounts of the company in accordance with the scheme and in accordance with the accounting standards, and any deviation in this regard shall be explained. So please have extra cautious mind in terms of providing reporting of the compliances with approved schemes of arrangement under section 232, section 237 of the Companies Act 2013. So these are major amendments which I am just quoting over here, which are very much relevant also for our financial statement, for our reports, for our regulatory aspects, for our filing, for our compliances. So these are the amendments which will definitely have a great impact on your entity as a auditor. Now, there was a great hue and cry. What are that hue and cry? It was related to the cryptocurrency and virtual currency. The Indian scenario is very clear. There is no specific law governing cryptocurrencies or virtual currencies. But yes, the provision have provided that this may be categorized as an asset actually. So in your financial statement, where any of your
auditee company has traded or invested in cryptocurrency or virtual currency during the financial year, relevant financial year, the additional disclosure shall be, and it includes the profit or loss on transactions involving cryptocurrency or virtual currency shall be taken care of. Amount of currency which is held as the reporting date means what are the stock of those currency must be reported. Now, any deposit or advances from any person for the purpose of trading or investing in cryptocurrency or virtual currency must be taken care of. Any trade receivables, aging schedules and trade payables aging schedule must be provided. Any utilization of borrowed funds and share premium account must be disclosed actually for the purpose of our current year financials or any financial year relating to that actually. So what is important as far as your reporting is concerned as a auditor? Now there is a specific mention about the Benami property which is being held. So where any proceedings have been initiated or there is a pendency against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and rules made therein, the company shall disclose additional information in its financial statements. What is the detail of such property? The description, the address, maybe the size. So details of such property shall be provided. What is the amount, maybe related to circle rate of that property, if that is there at all, or maybe estimated realizable value, and details of beneficiaries, if it can be digged out from the document which are there or which are available for the purpose of your audit. If property is in the books, then reference to the item in the balance sheet must be noted. If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons, appropriate reasons why it is so. And where there are proceedings against the company under this law as an abater of the transaction or as a transferor, then the details shall be provided thereof. If there is a nature of proceedings which proves non-compliance and status of the same and company's view on the same in the notes to account must be provided. So this particular information has been now amended. So under the amendment, this details of Benami property held must be provided in the financial statement. Now, who is willful defaulter? A IBC norm is here. Corporate debtors has been notified. The individual and partnership firm have not been notified. There is no concept of willful defaulter as of now, as far as our corporate word is concerned, or the Ministry of Corporate Affairs notifications are concerned. But yes, there is a mention about willful defaulter. So where a company is a declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, now additional details shall be given. Number one, date of declaration as a willful defaulter. Detail of default, any, it means what is the amount, what is the nature of default with regard to a financial transaction. Willful defaulter has been provided a definition, and it will mean a person or an issuer who or which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by the Reserve Bank of India. There is a separate subject matter, but all the details with regard to the willful defaulter has to be provided additionally in the financial statement. It may be related to your insolvency and bankruptcy code as well, wherever you go voluntarily for the purpose of declaring yourself as a willful defaulter. Now, if you have any relationship with the stuck-off companies, provision section 248 can be just taken care of. Wherever there is a maybe entry of investment, entry of loan, entry of any advance, entry of any customer or any client, if a construction company is dealing with any of the corporates, and those corporates have become stuck-off companies on the MCA portal, which is very easy to just categorize. So whenever you are dealing with any of the unsecured creditors, maybe
loan providers, investment or intercorporate investments. So whenever in the financial statement there is a mention about the corporates, please go beyond the board and check their current status on the MC portal, whether they are categorized as a compliant company, non-compliant company, or a strike-off company. If those categories are strike-off companies, for example, so wherever there is a transaction, it means transactions may include loan entry, investment, advance, whatever. So if there is a transaction with the companies which are struck off under section 248 of the Companies Act 2013 or Companies Act 1956 section 560, the company shall disclose additional detail which will provide more disclosure about those struck off companies or name and SIN number of those companies. Now there is a additional disclosure of shareholding by promoter in the prescribed format. Prescribed format has been provided as a tabular form where you have to provide additionally about the reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets, disclosure with regard to the loans or advances which have been granted to the promoters or directors, KMPs and related parties, and reconciliation and reasons of material discrepancies in quarterly statements submitted to the bank and books of accounts. Now, these are, I will just go back and I will again start from number one. Why? Because these are very important one. Number one was registration of charges or certification charges with the registrar of companies, compliance with number of layers of companies, and some mentioning about the ratios depending on the financial statement, compliance with approval of the schemes and arrangement, details of cryptocurrencies and dealing in that virtual currency, trade receivables, aging schedules and trade payables aging schedules, utilization of borrowed funds and share premium, details of Benami property held and willful defaulters, relationship with the stock of companies, and more disclosure with regard to the promoters' shareholding in the prescribed format, reconciliation of the gross and net carrying amount of each class of assets, disclosure with respect to loans or advances granted to promoters or directors and KMPs and related parties, and reconciliation and reasons of material discrepancies in quarterly statement submitted to the banks and books of accounts. Now, other amendments or changes have in Schedule 5 with regard to the remuneration to the non-executive director. Earlier, there was no mention about remuneration to the independent director, that is falling under the category of independent director and the non-executive director. Now, there is a specific mention in the Companies Act 2013 under Schedule 5 of the Companies Act 2013 in Part 2. Now, you may look at this table. The last table has been added. Actually, it provides remuneration which is payable. It shall not exceed in rupees in cases of other director, including non-executive director. So other director category will include non-executive director or maybe independent director. So whenever you have a chance to analyze or evaluate or maybe assess the quantum of the remuneration paid to the executive and non-executive director, please refer Schedule 5, whereas based on the effective capital, the different categories of remuneration has been provided, varying from 12 lakhs, 17 lakhs and 24 lakhs, and it has to be just taken care of very clearly. Now, minimum offer period for right issue has been reduced from 15 days to 7 days. There was a huge cry for this amendment from the private sector, private companies. Now this has been there. You can wrap up your right issue from 15 days to 17 days. So this period has been just reduced. So for the purpose of this section 62(1)(a)(1), the time period within which the offer shall be made for acceptance, it shall be not less than 7 days from the date of offer. So 15 days have become 7 days now. There is a reduction in the number of days. Now, these are the categories of companies which are not to be considered as a listed company. So wherever there is a debt listing, actually, private company can have their debt listed on BOSes actually. So these companies will not be considered as a listed entity provided in section 2, subsection 52.
So public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange, but have listed their non-convertible debt securities issued on private basis, they may not be categorized as a listed companies. Or any private company which have listed their non-convertible debt securities on private placement basis on a recognized stock exchange, they may not be termed as a listed companies now. Or public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange, but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as provided under Section 3 of Section 23 of the Act, which is beyond the jurisdiction of our stock exchanges, may not be, categorized as a listed company. So these are the major amendments which have come. Now, various relaxation under the provision of the Companies Act 2013 have been there. Relaxation in holding a board meeting and annual general meeting has been there, which has been provided as a platform through video conferencing for restricted matters. Many of the stakeholders asked whether it will continue. Oh, it is continuing till the time it is revoked, actually, right? So relaxation in holding board meeting beyond 120 days time permitted due to the COVID-19 situation is there. Relaxation in holding annual general meeting as a part of your compliance as on 31st March 2020 beyond 30th September 2020 was there, and relaxation payment of additional fees on various forms under CFSS, which are just ended on 31st December 2021, has been there. MC has notified that is pending amount for central amount on police forces, which was added later on under the CSR activities in Schedule 7. It has to be taken care of. So wherever you come across, please just have a look, because apart from the statutory audit, you may have some sort of a assignment which is governing due diligence processes of many of the companies which are subject matter of takeover and all. So you can just very well check these relaxations which have been taken positively by the corporates, actually. Now, extension of date of filing was there under NFRA 2. In fact, that time has just missed, actually. So extension of relaxation from the mandatory residential requirement of 180 days was just they are reduced to 140 days. Why? Because for a resident director, he has to satisfy this criteria. It has been relaxed due to COVID-19 period. Relaxation for non-resident has been reduced from 182 days to 120 days. It can very well be covered as a resident director. Now, conversion of OBC into private limited company based on turnover and paid up capital has been lifted. So now there is a open availability where based on the criteria of paid up capital and turnover, now there is no as such restriction on OPC for the purpose of automatically become a private limited company. Now there is a restriction with respect to implementation of CARO Amendment Order 2020. Now implementation date was with effect from 1st April 2022. That is the current financial year. And MCA has also notified certain very dynamic forms, e-forms, single forms for the purpose of incorporation, that is Spice Plus, which includes registration of GST, ES, ESIC, Provident Fund, PAN, 10 bank account opening at one go. So you will have the liberty to take care of those also, my dear friends. Now, there is a bit confusion about this particular rule, that every company which uses accounting software for maintaining its books of account shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, actually. So every company means there is no exception as such so far. Now you have to be very cautious if you look at this particular rule, amending companies accounts rule 2014. So if it is being created an edit lock for each transaction and change made in the books of accounts along with the date when such changes were there, and you can track the trail. So please ensure that the audit trail cannot be disabled. So this amendment is effective from 1st April 2022. This is a relaxation which has been provided due to COVID, but now in the current financial year, please follow this, understand it, and then please regulate it. INC 35 has been there.
which is Aadhaar based. Deepak ji, this is applicable for this year, Yeah, from 1st April it is 22. applicable for the current financial year, sir. It has Current become financial year. applicable from this current financial year. So that is why I just quoted that there is a bit confusion. Why? Because MCA has extended so many times this particular provision, but now the last amendment is 1st April 2022. So auditor has to report if there is no maintaining a log, error log. Absolutely. Specifically, they have to provide this actually. दीपक जी, जैसे छोटी मोटी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनके पूरे साल में 20-25-50 एंट्री होती तभी है, सर मैंने ये कहा, यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, जो इस अमेंडमेंट में कहा है वो एवरी कंपनी यूज कर रखा है और किसी हाँ जी। कंपनी को अभी तक इसने एक्सेप्शन नहीं दिया। तो ये छोटी मोटी कंपनी कहाँ करती है सर? ये तो ईयर एंड पे बुक्स बना करके अपना, जिनके बिजनेस ही नहीं है सर। तो इसका जो सर प्रियम्बल है उसको समझने की जरूरत है। एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट सर। कुछ कंपनीज आज भी कैसे रखती हैं सर अकाउंट, सॉफ्टवेयर तो यूज ही नहीं करती हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्या मतलब सर? इनका जैसे टैली वगैरह को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मानेगा या टैली हो गया सर, बिजी हो गया, ऑफिस बिजी हो गया, सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये तो सब सभी कर रहे हैं सर, ये तो सभी कंपनी के पास है। आपको ये कहीं एक्सेप्शन नहीं है। यू हैव टू हैव ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच हैज अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच ट्रांजैक्शन सर। कैसे करेंगे सर इसको? प्रैक्टिकल तो कुछ देखने हैं इसको? अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। यू हैव टू वेट फॉर, व्हाई? बिकॉज करंट फाइनेंशियल इज गोइंग ऑन एंड extensive 9 months have gone. There is no clarification as such from the ministry as such. So wait for that clarification from the ministry itself. But yes, because 9 महीने हो चुके हैं, आपको दिसंबर में 9 महीने हो जाएंगे और आप अपना फाइनेंशियल ईयर 31/2023 को खत्म करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस होकर इस काम को देखिए। जहां पर ये आप क्वार्टरली बेसिस पर भी कहीं ऑडिटर अपना ऑडिट करता है, जहां पर पूरे साल ऑडिट चलता रहता है सर, राइट, और मंथ टू मंथ वहाँ पे तो प्रॉपर होते हैं, जहाँ पे क्वार्टरली ऑडिट हो रहा है वहाँ तो प्रॉपर नहीं है। छोटी मोटी मीडियम कंपनी है ना जी, वो भी नहीं कर रही। जो बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी सर अकाउंटेंट होते हैं, वो टैली अपने पास रखते हैं। वो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिकॉज कोई एक्सेप्शन नहीं आई है सर अभी तक। कोई भी एक्सेप्शन मत रखिए, दिमाग में रखिए। एवरी कंपनी यूज करता है सर यहाँ पर जो रूल और अमेंडमेंट मेंशन करता है, तो प्लीज बी कॉशियस सर। राइट जी। Now, there are certain forms, merger or amalgamation of 2 or more startup companies is now factual. It has been allowed with more 1 or more small companies. A waiver of additional duties for 40 forms was provided as a relaxation in 2021. Debtor KYC now has been there up to 30 September 2022. Take it to 2022 without any fees. If you have not done it, now you have to incur a cost of 5,000 each. I think these are the major amendments which I wanted to have for you, my dear friends. If any question is there, I am free, sir, for another 5-10 minutes. I was able to just wrap it up within the time slot provided to me, Pradeep sir. Over to you. कोई क्वेश्चन आया हो तो सर आप ले सकते हैं। Throw some light on V3 version. Yes, V3 version, sir, as I told you, is not new, and V3 version में जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपके आ रहे हैं सर, राइट, और ये जो V3 वर्जन्स में आपके डिफरेंट यूजर रोल्स हैं MC 21 के अंदर, एज ए प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर एसोसिएशन, सो ये 31 अगस्त से लाइव हो चुका है। पहली बात तो ये आप समझिएगा, 31 अगस्त से आप लाइव हैं, तो आप वेब बेस्ड फॉर्म आप फिल करने लग गए हैं। इसमें यूजर के ग्रुप बना दिए गए हैं। जो रजिस्टर्ड यूजर है वो कंपनीज हो सकती हैं, LLP हो सकती हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, बिजनेस यूजर्स हो सकते हैं जो कि प्रोफेशनल्स आप और मैं हो सकते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी में, कुछ मैनेजर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। इन लोगों को जाके इन कैटेगरी में अपने को रजिस्टर करना था, या वो ऑटोमेटिकली अगर आपने नहीं किया तो माइग्रेट भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट आप कर पाएंगे। कुछ यूजर ग्रुप और हैं, जैसे कुछ ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं जिनको आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, कुछ नोडल ऑफिसर्स हैं IPF अथॉरिटीज के, कुछ डिप्टी नोडल ऑफिसर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको आप डेजिग्नेट कर सकते हैं और इनको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं डेजिग्नेट करने के, आपको थोड़ा सा एक FAQ MCA पर अवेलेबल है,
जो कि वर्चुअल मोड में है उसको एक बार जाके गो थ्रू करने का है जब भी आप अपने को रजिस्टर करने जाते हैं V3 बिकॉज रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। एज ए स्टेक होल्डर, एज ए बिजनेस यूजर, एज ए रजिस्टर्ड यूजर आप कैसे करना चाहेंगे अपने को? अच्छा, आप अगर प्रोफेशनल भी हैं और आप कहीं डायरेक्टर भी हैं तो क्या आप सिंगल अपना यूज कर पाएंगे? नहीं, आपको डिफरेंट दोनों तरीके से एज ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर आप सर्टिफाई कर रहे हैं फॉर्म्स, या एज ए डायरेक्टर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो दो अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। पहले एक पैन से हो जाया करता था सर, अब नहीं हो रहा है सर एक पैन से। तो ये कुछ दिक्कतें अभी आ रही हैं, मिनिस्ट्री उसको अभी दूर कर रही है कि अगर मैं एज ए प्रोफेशनल सर्टिफाई करता हूँ फॉर्म और मैं एज ए डायरेक्टर भी सर्टिफाई करता हूँ, तो मेरे को ये सिंगल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया गया, मुझे डिफरेंट क्यों करना है जब मेरा सिंगल पैन होता है, सिंगल पैन बेस्ड होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन है, इसको थोड़ा सा आप प्लीज उस FAQs को पढ़ के आप कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसको जब मैं लाइव आपको कभी समझाऊंगा तो आपको मैं लाइव उसको करके दिखा सकता हूं, जब मैं आई विल हैव एम्पल टाइम, एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स उसमें आपको चाहिए समझने के लिए। और जितने भी वेब बेस्ड फॉर्म आ रहे हैं उनको आपको डू एंड डोंट्स भी सीखने होंगे, बिकॉज PDF तो आपको अटैच करना होता था और उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती थी। तो वेब बेस्ड फॉर्म तो आपको कंपैरेटिवली फिगर्स को MCA पर एनालाइज करने के लिए भी दे दिया गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर ये। जब बिजनेस सिग्नेचर आप एसोसिएट करेंगे तो वो आपके कैटेगरी 3 भी हो सकते हैं और आप ले सकते हैं, उसको भी आप क्लियर करें, क्योंकि अभी तक कैटेगरी 2 जो चल रहे हैं उसको माइग्रेट किया गया है, तो कैटेगरी 2 ही अभी आपके चलते रहेंगे अगर वो आपके आज भी MCA पर एक्टिव हैं। अदरवाइज फिर आपको अपने कैटेगरी 3 पर, जो कि मोर सिक्योर्ड है, उस लेवल पर आना पड़ेगा। कुछ कैटेगरी ऑफ फॉर्म्स थे लाइक CSG1, CSG4, CSG6, CSG8, CSG9, DR3 KYC, DR3 KYC वेब, DPT3, DPT4, ये फॉर्म ऐसे थे जो 31 अगस्त से आ चुके हैं वेब बेस्ड एक्चुअली। सो यही मैं V3 में कह सकता हूँ कि इन फॉर्म्स का जो कहना चाहिए सेगमेंट है वो बड़ा स्पेसिफिक हो गया है और थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना है, बिकॉज आप जब वेब बेस में एंट्री करते हैं तो वेब बेस में एंट्री में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे बोलूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कॉशियसनेस बढ़ गई है। तो जहां भी आपको अपने सिग्नेचर अटैच करने हैं वेब फॉर्म में, 2 बार इफ यू कैन हैव प्रिंट आउट लेके टिक करें आप इंफॉर्मेशन को, क्योंकि उसके करेक्शन का कोई माध्यम नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। तो ये मैं अब BTS में आपको जरा अभी अब बता सकता हूँ। जयप्रकाश जी, ओवर टू यू। Thank you very much, sir, for this interactive and very educated deliberations. You have explained in a very length manner an important changes, amendment in the company law and procedures. Now, I request Pradeep Jain ji to please present a vote of thanks. Thank you, JP Agarwal ji. I sincerely thankful to CA Lokesh Gupta ji for his excellent deliberation and discussion on challenges in concurrent audits. I also wish to express my special thanks to CS Deepak Sharma ji for deliberation on discussion on latest changes in the company law and procedures. I also thankful to all our friends who spared their valuable time to make this seminar educative and interactive. Now I would like to seek your permission to conclude today's program. प्रदीप जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में। Yes, एक आया है। Sir, how to use unspent CSR amount of private previous year? कोई भी अनस्पेंड अमाउंट है तो 3 साल का लॉगिन तो आपको वैसे भी दिया गया है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए होगा अनस्पेंड अमाउंट आपका, या सिंगल प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो अगर आपका मल्टीपल ईयर्स के लिए है जो कि 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप उसको एक अलग सेपरेट अकाउंट अनस्पेंड अकाउंट में डाल देंगे और वहीं से इस फंड को आप यूटिलाइज करेंगे अपने अवेलेबल असाइनमेंट्स में, ऑप्शंस में, जो कि शेड्यूल 7 जो मैंने आपको अभी बताया उसके अंदर। बट यस, 3 साल का पीरियड याद रखिए, अनस्पेंड अमाउंट को आपको 3 साल तक दिखाना है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको रिपोर्ट करना है कि अनस्पेंड अमाउंट ईयर टू ईयर बेसिस पर कितना आपका आउटस्टैंडिंग है और कितना आप खर्च कर चुके हैं। इसके लिए CSR का एक बहुत अच्छा फॉर्मेट CSR रूल्स ने दिया है, जिसको आपको डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर, डायरेक्टर की रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसको देना है, प्रोवाइड करना है कि कितना आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, कितना अनस्पेंट है, कितना कर चुके हैं और किन किन प्रोजेक्ट्स में उसको किया जाना है। तो ये सारे के सारे अनस्पेंट से रिलेटेड ही आंसर हो सकते हैं आपके लिए। ओवर टू यू प्रदीप जी। Sir, now we can conclude the program. Thank you so much, sir. Thank you so much for the Thank you. opportunity. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you. I'm always available whenever you, Gopalji is my mentor, and you all, have the liberty to just, call me anytime, sir. Not Yes, sir. invite me, but call me जब भी anytime. आपसे कभी Yes. टाइम लिया है, आपने हमेशा भी टाइम दिया। मैं कभी भी हाँ, सर, आज भी आई एम नॉट वेल एक्चुअली, मैं अभी फीवर में ही हूँ जब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा अच्छा। हूँ, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तो V3 को आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल्स में लेके जाइए, बिकॉज वहां पर ह्यू एंड क्राई है, और एक फिजिकल प्रोग्राम रखिए उन लोगों के लिए जो आपके ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल स्टाफ, क्योंकि वही जी, है जो फर्स्ट लेवल पे उन फॉर्म्स को भरने वाले हैं सर। प्रोसीजर वही देख रहे हैं सर। Yes. तो एक वर्कशॉप सी रखिए आप, विल बी जस्ट हाईली ऑब्लाइज्ड टू एड्रेस दैट। नहीं सर, ये करेंगे, फिजिकल रखेंगे अभी जी। जैसे प्लान करते हैं। नहीं, दिसंबर में वर्कशॉप करने का थोड़ा प्लान चल रहा है, देखो जी, उसको करिए सर, वी आर ऑलवेज देयर सर। राइट जी, राइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू। नमस्कार।